I'd like to ask the Minister through you. The ischemic heart disease was the leading cause of years of life lost due to premature mortality in Tamil Nadu in 2016. Were any steps taken by the union government to mitigate such diseases, sir? Thank you. सर, आदरणीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहूँगी कि लगातार हम स्क्रीनिंग हो या फिर पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उसका टेस्टिंग हो, मदर के एएनसी चेकअप को भी मैंडेटरी किया है। लगभग 4 एएनसी तो हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से भी की जा चुकी है, जिसमें कि इस तरीके के हार्ट डिसीज को पहले ही डिटेक्ट किया जाए, जिसमें हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स का भी सहभाग होता है। आदरणीय सदस्य को मैं ये कहना चाहूंगी कि एनसीडी क्लिनिक्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू वी आर डायग्नोसिंग द पेशेंट एंड ट्रीटिंग देम। धन्यवाद। प्रताप चंद्र सारंगी। Sir, whether congestion of crusher dust is very much responsible for diseases like silicosis and tuberculosis, whether government has initiated any study in this line, and what are the findings and what steps has been taken to remedy the malady? Sir, what steps have been taken to stop illegal crushers and other illegal operation of industries which are responsible for this? How to maintain the general immunity of common masses, and how to control the air pollution, which is very much responsible for heart diseases, and the today's sound pollution is very much creating very much alarming situation, and what steps has been taken by the government to stop all these things? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि उन्होंने चिंता जताई है कि सिलिकोसिस को लेके क्या हेल्थ डिपार्टमेंट का काम चल रहा है। बिल्कुल, सिलिकोसिस हो या अदर कॉजेस के कारण हार्ट डिसीज हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, उसके कारण एक स्क्रीनिंग भी किया जाता है। जो कंपनीज है उसके तहत हमारी हेल्थ टीम स्क्रीनिंग भी करती है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेपरेट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। उस तरीके से ये स्क्रीनिंग आगे भी बढ़ा है, और इसके तहत हम स्केल अप रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फॉर टीबी डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज क्लोजर टू द कम्युनिटी की भी सुविधा दी गई है, और ड्रग्स और उसके लिए गांव-गांव तक हमारी आशा बहनें ये सेवाएं भी प्रदान कर रही है। श्री बेनी बेनन। Sir, the minister's reply is very good reply. I condemn it for the minister. And the government of India supporting free cost to dialysis service. Sir, in many countries, these kidney patients and other patients include in the disability list. Whether the government of India include the kidney patients and the heart patient in the disability list, so they can give, they will get so many other type of help, including their family members. सर, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन रिगार्डिंग द डायलिसिस सेंटर के तहत है। Can you provide them, include them in the disability list, so they will get another assistance? Yes. The financial assistance and other assistance to the family members also. सर, ये प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जो सेवा दी जा रही है फॉर दैट किडनी पेशेंट की डायलिसिस के लिए, ये आज हमने लगभग 1000 सेंटर्स खुले हैं, जिसमें कि हमारे 7000 मशीन्स है। डायलिसिस सर्विसेज पेशेंट के लिए आज तक 13 लाख पेशेंट के लिए प्रोवाइड की है, और लगभग 137 लाख हीमोडायलिसिस के सेशन हुए हैं। सर, ये खास तौर पे बीपीएल के पेशेंट को हमारी प्रायोरिटी है, और जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट थ्रू यू सर कि दे कैन सेंड द प्रपोजल्स थ्रू पीआईपी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। धन्यवाद। जगदम्बापाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे हमें अनुमति दी है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि WHO की जो रिपोर्ट है 2021 की टीबी के संबंध में, इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्वे किया है कि जो आर्सेनिक वाटर है कंटेमिनेटेड, जिसके कारण काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, किडनी की, लंग्स की, और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो रहा है। तो हमारे सिद्धार्थनगर
बहराइच, श्रावस्ती, जो नेपाल की फुटहिल्स हैं, वहाँ के पानी में जो WHO की रिपोर्ट्स है और सर्वे के अनुसार, तो जो पूरे देश में भी इस तरह से अगर आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन है जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही, उसके संबंध में क्या कोई अध्ययन भारत सरकार कराएगी या किया है? अगर किया है तो उस संबंध में फिर क्या उपाय या क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सरकार तय कर रही है कि इस तरह से लोगों को शुद्ध वाटर मिले, जिससे कि जो जल जनित बीमारियां हैं वो जल जनित बीमारियों को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है। ट्यूबरक्लोसिस और पानी से होने वाले रोग दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं पहले ट्यूबरक्लोसिस के संदर्भ में बता दूं माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 21 से 25 लाख ट्यूबरक्लोसिस के केस प्रतिवर्ष आते हैं और उसमें से 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस का देश में से टीबी से मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस कार्यक्रम में कई बार उपस्थित रह चुके हैं और देश में सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप को जोड़ के आज कई लोग ट्यूबरक्लोसिस के डिसीज से ग्रस्त लोगों को गोद ले रहा है, उसको रेगुलर गवर्नमेंट की ओर से मेडिसिन सप्लाई जा रही है और उसको न्यूट्रिएंट फूड भी दिया जाता है, जैसे कि टीबी से नाबूदी, टीबी से देश को मुक्ति मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया कि 2025 तक हमें देश में से टीबी मुक्त करना, इस दिशा में मुहिम चल रही है और हम उसमें सक्सेसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि पानी की वजह से कई डिसीज फैलते। बात सही है, हर देश के नागरिक को अच्छा पानी मिले इसलिए हर घर नल की योजना चलाई जा रही है, जैसे उसको नल पे पानी मिले, शुद्ध पानी मिले और शुद्ध पानी मिलने से भी कई रोग नाबूद हो सकते हैं। बात सही है और इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 322 श्री तुरुना बुक्रार सर। Question number 322, sir. माननीय मंत्री जी, Answer is laid on the table of the House. That's okay. Sir, this harassment, chasing, killing, putting them in jail, it doesn't occur once in a way. So at least every month, 2-3 times, the Sri Lankan Navy is repeatedly harassing, doing a lot of atrocities against our Tamil fishermen. So last 3 years alone, in 2020, 74 fishermen were arrested and jailed. In 21, 143 fishermen were arrested. This year in 22, so far 88 people have been arrested. Even 2 days back, 2 days before, 16 fishermen from Rameswaram area have been arrested. So fishermen from Nagapattinam, Kotepattinam, Jagadapattinam, Pamban, Rameswaram, the entire coastal area, repeatedly, yes sir, repeatedly they are arrested in jail. Question. Sir, their boats are damaged. Those days, earlier, few years back, they were warned, fishermen, sometimes if they cross the boundary, they are alleged like that. But even if it is, some people cross the maritime boundary, they should be warned and sent back. Should not be fired and killed. And boats are damaged, nets are damaged. The catchment officers are carried away. So this should not happen, sir. Honorable member, ask question. Yes, sir. I want to know from the Honorable Minister. This should not happen again, sir. So what are the steps taken by the central government to stop these atrocities against Tamil fishermen? Sir, the government of Modi ji has always been making efforts for the safety and security of Indians wherever they are. And Indians abroad, whether they are fishermen, whether they are students, whether they are laborers, their safety and security has been of utmost importance. Very recently, we brought back 22,500 students from Ukraine in the war-torn area. And let me, so this is not a fishermen of Tamil Nadu who have been taken into custody by the
Sri Lankan authorities. Government has been engaging with the Sri Lankan government, and every year, whatever the number that has been given, 74 were arrested, were taken into custody in 2020, 96 were taken into custody in 22, but barring the 16 who are still in custody, we have been able to bring back every Indian fisherman who have been taken into custody by the Sri Lankan authorities, and Government of India continues to engage with the Sri Lankan authorities to bring back every Indian fisherman, including the 16 who are at present in the custody of the Sri Lankan authorities. Honorable Member. Yes, sir. Sir, every time when our fishermen are arrested and jailed, we members from Tamil Nadu, every time we raise this issue. Same reply every time you are giving. The sympathy alone will not resolve the problem, will not address the problem. So, what concrete step you have taken? It should be taken in the ministerial level. Either Prime Minister to Prime Minister, concerned Minister to Cabinet Minister there. The mere sympathy of words will not resolve the problem, address the problem. Sir, two things I want to ask. Sir, the people who are arrested, jailed still, should be immediately released. You have to take steps for that, number one. Sir, number two, for the dam boats, more than 100 boats were seized, laying on the seashore of Sri Lanka, destroyed, action, damage. Okay. So compensation should be, sir, we should get the compensation from Sri Lankan government for Tamil Nadu fishermen. This Sir, should be immediately. This should be done. So every boat costs 50 lakhs, 1 crore. Please. Sir, I appreciate the concern of the honourable member, and through you. Let me complete. So the boat costs 50 lakhs, 1 crore. The poor fishermen, they pledges their houses, jewels, everything, and buy the boat, but they are not getting back. So the damage should be claimed. So what are the steps the government has taken so far? And I request the government to insist the Sri Lankan government to give compensation to our fishermen. Sir, through you, I would like to inform the member that, as I mentioned earlier in the first part of my reply, government has been taking it up at the highest level, a setup of 2+2. That is the foreign minister and the fisheries minister. A mechanism has been set up to deal with such issues. There is a joint working group at the level of the fisheries ministry, and I would like to inform the House through you, sir, that today the joint working group is meeting between India and Sri Lanka to discuss all such issues. I would also like to mention that our mission has been interacting with them, providing consular access, providing the legal assistance, their day-to-day needs. So Government of India gives utmost importance to every Indian across the world, wherever they are. Sri Vijay Basant. Thank you, Speaker, sir. Sir, I want to raise a question. I've come from Kanyakumari, which is a long coastal line. A lot of people go for deep fishing. And I'm talking on behalf of all the MPs who represent the coastal area. Sir, people get caught every time, and it takes a long time to get them bailed out. And my request is, what is the External Ministry should have a diplomatic agreements with the coastal countries so that the people don't suffer like this, because they have imposed for a huge fine, and which the poor fishermen are not in a position to pay it. So I request the government to have the diplomatic agreements with all the coastal things, which will be helpful for the fishermen and not get stayed there and suffer a lot. Because our livelihood is dependent on the fishing, and they go for deep fishing and they cross the borders not unknowingly, and they get suffer a lot. So I need the government to take a call on it and have a diplomatic agreements with all the coastal countries, sir. Thank you. Sir, I would like to inform the honourable member through you that this is not this is an issue
which the government is very much concerned. It's not only about Sri Lanka. During the last week, 3 days ago, there was an incident where 61 fishermen were detained in Seychelles, 56 from Tamil Nadu, from Assam and from Kerala. The government and our mission in Seychelles moved so fast that 7th, the case came up in the Seychelles court, 22nd, they were let off, and they were repatriated back to India by the Indian Air Force flight on the same day. So this shows the concern and the seriousness in which the government of India under the Prime Minister approaches such issues. So I would also like to mention that government is in consultation, government is in discussion on issues related to Indian labor, whether they are fishermen, whether they are in some other jobs, to enter into agreements, understandings with various countries, and definitely I would say that this issue, it continues to be of serious concern and of utmost importance. Honorable Speaker, sir, we used to have a rapid response diplomatic channel to intervene in such issues of our fishers. Now, most of the time, Ministry of External Affairs is not considering this issue. Our poor fishers running court case in foreign countries their own. Whether the Ministry of External Affairs will initiate a permanent diplomatic channel to deal with this issue. I would like to inform the honourable member through you that his doubt that the Indian missions are not taking serious attention. I would like to clarify on that. Sir, every time such an issue comes up, Indian fishermen and their fishing boats are apprehended. Immediate steps are taken by the Indian missions. First, their confirmation of the detention, then provision of consular access, their early release and repatriation, along with fishing boats. And during the consular access, mission provides articles of daily use to the prisoners and inquire about their health. So the diplomatic mechanism, our missions are empowered to take up those diplomatic efforts, to see that the Indian fishermen who are apprehended by various other countries wherever they by mistake cross over the maritime borders, but every effort is made to bring them back, and for that all diplomatic efforts are undertaken. Question number 323, Diya Kumari ji. 23 आप सभा पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद और योग के महत्व पर विशेष ध्यान दिया और पूरे देश में आयुष का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि अभी हाल ही में वो मेरे लोकसभा क्षेत्र राजसमंद में एक कार्यक्रम में पधारे थे और उस कार्यक्रम में एक पत्र के माध्यम से मैंने उन्हें आग्रह किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाने की बहुत बड़ी डिमांड है और उस पर ध्यान देके वहां पर आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाए जाएं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इस पे अभी तक सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे साथी संसद सभ्यों महोदय ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेहत अच्छी रहे उसके बारे में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूं। वैसे भी जब इंसान बीमार होता है और पेशेंट बन जाता है तो उसके रिलेटिव की कंडीशन बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे ही 2014 में अपना एज ए प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाला, तुरंत ही
उसने नेशनल आयुष मिशन घोषित किया। तो जैसे नेशनल आयुष मिशन में क्या पार्ट है, तो पहले तो आदमी बीमारी ना पड़े, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। माननीय मंत्री जी, आप तो ये जवाब दो, सिस्टम क्या है? क्या राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है? कैसे वेलनेस सेंटर? बता दो उनको। उसमें क्या है कि जो राज्य सरकार प्रस्ताव उनको भेजती है, उसके बाद उसका जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान होता है, उस स्टेट एनुअल एक्शन प्लान से हमारी मिनिस्ट्री में प्रपोजल आती है। उसके बाद हम विचारणा करके उसको एग्जामिन करके हम आयुष और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देते हैं। तो मैं जब नाथ द्वारा गया था तो उन लोगों ने गिने चुने ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डिमांड किया थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आगेवानी में हमारी मिनिस्ट्री ने राजस्थान को कुल हम 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दे रहे, उसमें राजस्थान को 1,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा राजस्थान के लोगों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसमें उसके जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आयुष मंत्रालय द्वारा राजस्थान जिले में कुल 26 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राजस्थान जिले में 14 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रगतिशील श्रेणी के तरह कार्यात्मक है। माननीय मेंबर। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने जितने मांगे थे उनसे ज्यादा आपने आयुष वेलनेस सेंटर्स मेरे संसदीय क्षेत्र को दिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरी 2 डिमांड्स और हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में बोटाटी धाम है, जहां पर पैरालिसिस के बहुत ज्यादा पेशेंट्स भी आते हैं। तो बोटाटी धाम में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाने का मैं आपसे एक निवेदन करती हूं कि वहां भी एक आयुष वेलनेस सेंटर खोला जाए और जेतारन में भी एक आयुष वेलनेस सेंटर खोला जाए, जो कि दोनों ही इस लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा राजसमंद धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है, यहाँ आयुष अस्पताल की आवश्यकता लंबे समय से है और मेरी ये मांग है, मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी ये एक मांग है कि वहां पर राजसमंद जिले में मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत 100 बेड का आयुष अस्पताल खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बुटाटी धाम और जैतारण में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से उचित प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुसार आयुष मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर सकती है और इसको हम एग्जामिन करेंगे। और साथ में ही जैसे हमारे साथी संसद महोदय ने अपने 100 बेड के आयुष हॉस्पिटल में डिमांड किया, लेकिन नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री की ओर से 50, 50, 30 या 10 बेडेड एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता का प्राविधान है और इस हेतु प्रदेश सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से उचित प्रस्ताव गाइडलाइन के अनुसार आयुष मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित कर सकती है। वैसे भी हमने राजस्थान में कुल 6 50 बेडेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू, बीकानेर, सीकर और जयपुर में हमने ऑलरेडी ये 50 बेडेड हॉस्पिटल ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। श्री डीन कुरियाकोस। Sir, in connection with the health and wellness center, sports Ayurvedic treatment having so much demand, especially in Kerala. In my constituency, we are under preparation for start a sports Ayurvedic center there. Sir, my question is, in connection with the health and wellness center under Ayush Ministry, whether the government may take initiative to start sports Ayurvedic treatment center. Good question. Very good question. Respected Speaker, sir, in reply to the question raised by Honourable Member, I could say that if the government of Kerala send a proposal through their annual action plan
then definitely this ministry will look into the matter. Question number 324, Sri Chandan Singh ji. Question number 324. माननीय मंत्री जी, सदन पटल पे रखा। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो विचाराधीन कैदी है और उन्हें कोई सजा भी नहीं हुई है, फिर भी उन्हें मतदान से वंचित रखा जाता है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार विचाराधीन कैदियों को मतदान का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्या यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं है? सर, वोटिंग का प्रोसेस इस देश में बिल्कुल साफ है और इलेक्शन कमीशन समय समय पे लोगों के सामने में भी इसका जागरूकता लाते रहते हैं। चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, एनकरेजमेंट दिया जाता है कि उसका वोटिंग हो, लेकिन किसी एक परिस्थिति की वजह से उसका वोटिंग नहीं हो पाते हैं तो फिर उसको जबरदस्ती वोटिंग करने का कंपल्सरी करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए वोटिंग करना सबका अधिकार है, लेकिन जबरन वोटिंग कराना ये कोई इस तरह का प्रावधान संविधान में भी नहीं है और इस पार्लियामेंट ने भी कोई ऐसा कोई चीज का पारित नहीं किया है। वो तो पूछ रहा है विचाराधीन कैदी को परमिशन है या नहीं। वही मैंने कहा कि अभी उसके बारे में अगर मैं कहूंगा कि किसी कैदी को लेकर के, तो क्योंकि वोटिंग राइट पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सब देश का नागरिक का समान अधिकार है, इसलिए हम अलग से कैदी के लिए बात नहीं रख सकते। अजय निषाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक है। महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान 100% हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अभी हमारे देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम फर्जी मतदान की समस्या से निजात मिलेगा। महोदय, ऐसा देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग अपनी आजीविका, रोजगार और रोजी रोटी के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर दूसरे प्रदेश में रहते हैं और चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं और मतदान से वंचित हो जाते हैं, जिसका असर प्रतिशत पर पड़ता है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्या जिस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लाई गई है, क्या उसी प्रकार वन नेशन वन वोटर आई कार्ड का योजना लाने का सरकार विचार कर रही है क्या? सर, जो हमारे सदस्य ने पूछा है ये बहुत ही गंभीर मामला भी है और ये सरकार का विचार में भी है कि इस पे कुछ कदम उठाया जाए और हमने प्रक्रिया भी शुरू किया है और मेरे लेवल में भी इलेक्शन कमीशन से भी इसके बारे में काफी जिक्र किए हैं कि पूरे देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए और एक मात्र इलेक्टोरल रोल हो जिसको सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉलो करे, इसका भी हमारा विचार है। तो इसके लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें लेकिन फर्जी वोटिंग से रुके, इसलिए जो पिछले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लाए थे उसमें हमने एक इलेक्टोरल रोल को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान भी उसमें रखा है। अभी वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन इससे जो डबल नाम होते हैं, फर्जी वोटिंग होते हैं, जो बोगस वोटिंग होते हैं, उसमें भी रुकने का बड़ा इसमें कामयाब होने का संभावनाएं है। और भी आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो भी जरूरत कदम है हम उठाएंगे और हमारे सरकार के सोच में है कि वन नेशन वन वोटर लिस्ट हो, ये हमारा सोच है और साथ साथ में एक क्लीन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम हो, ये भी हमारा सोच है। राजीव रंजन सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के मूल प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर दिया कि चाहे जेल में हो या जेल के बाहर हो, उसको वोटिंग करने का अधिकार है, जो मेरी समझ से तथ्यों से परे है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जब जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है तो उसका फंडामेंटल राइट सीज हो जाता है और वोटिंग जो है वो फंडामेंटल राइट है
तो इसलिए हम माननीय मंत्री जी को ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह के जब सेंसिटिव प्रश्न हो तो उस पर सेंसिटिव उत्तर देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। तो सलाह आपकी। नहीं सर, ये देखिए जुडिशियल का जो प्रोविजन है, अगर कोर्ट से परमिशन लाते हैं, इस पे हम कैसे यहाँ टिप्पणी कर सकते हैं? हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए सारा नागरिक समान है, लेकिन अगर जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो इसको आप भी नहीं कह सकते। मैं लॉ मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका वोटिंग राइट सीज हो गया है। जो कोर्ट का अधीन में चले जाते हैं और जुडिशियरी प्रोसेस में जब आ जाते हैं, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। चुनाव भी जीतते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? के मुरलीधरन before to the central government that the voting right should be given by the Pravasi Indians. Sir, in the state of Kerala, most of the Keralites are working in Gulf countries. In the election time, they are not in a position to come back and cast their vote. So I request the Honourable Minister whether the government should consider Pravasi voting right. Yes, sir, this is a very positive suggestion. And I have already told Election Commission also that we will make provisions and give us proper suggestions how we will allow our people who are staying outside and working to be given an opportunity to vote. And we are also thinking that online voting system, how it can be encouraged, how it can be done. But before declaring anything, before doing or making any declaration, we have to ensure the safety, the transparency, and also to protect it from any malpractices or misuse. मनीष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है कंपल्सरी वोटिंग को लेकर, मैं माननीय मंत्री जी से इत्तेफाक रखता हूं कि जबरन किसी से वोटिंग कराना उचित नहीं है। पर अगर आप देखें और पूरे देश में देखें तो जो इस देश के कथाकथित अमीर इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, और जो वर्किंग क्लास के इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक रहता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले। तो इस सदन में अगर आप एक चर्चा कराएं कि किस तरह से ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। और मेरा सवाल मंत्री जी से एक है, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सवाल ये है मंत्री जी कि डज द सोर्स कोड of the electronic voting machines, does it vest in the Election Commission of India or does it vest in the companies which are manufacturing the EVMs? I want a specific answer to that. If you don't have it, ready, you can send it in writing. Sir, जैसे कि जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद जज इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, जरूर नोटिफिकेशन हम निकालते हैं। वैसे ही कंपनी अगर मशीन बनाते हैं और वो इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, उसके बाद कंपनी कैसे कंट्रोल करेगा इलेक्शन मशीन को? वो ईवीएम के इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं। EVMs lie with the election commission or does it lie with the company which manufactures it? That's my specific question. सर, वो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और इन्फेरेंसेस भी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये है, क्या सवाल आपने पूछ लिया। मैं एक मिनट बैठो मंत्री जी, एक मिनट, आप भी बैठो। एक बात, मैं पूरे विश्व के कई देशों में गया हूं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, और देश में 17 आम चुनाव के अंदर जिस तरीके से चुनाव आयोग करोड़ों लोगों का मतदान सिस्टम कराता है, ये कम से कम भारत के लोकतंत्र को विशेष रूप से बधाई देना चाहिए।
इतना कोई सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम डेवलप करना मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर हो गया सर 325 सर, क्वेश्चन 325 सर। सर, ये सबका प्रयास है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, हम सबका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा, ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जैसे बताया, पूरे दुनिया में इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस के लिए हिंदुस्तान में लोग सीखने के लिए भी आते हैं और हिंदुस्तान लोगों को बुलाते भी हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन के टीम विदेश में जाते हैं, यूएन की तरफ से इन्विटेशन आता है, तो इंडियन इलेक्शन सिस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड by the worldwide as one of the best system in terms of conducting the election. Question number. Yeah, Balu. Sir, security of. But don't try and dodge and evade the question. It's a very serious question which goes to the heart of our parliamentary democracy. Question, Balu ji. And I would like to place those concerns on the floor of the House. Sir, security of our borders have become more vulnerable. This is very much evident by our experience in Ladakh and as well as Arunachal Pradesh. So in this context, the defense expenditure has to be increased multifold. And moreover, the defense expenditure as of now is, it is about 2. Maybe correct, my stat is, so it is about 2.33 of GDP. I think it is very much correct. And moreover, the expenditure has to be enhanced in the area of modernization, in purchasing sophisticated equipment so as to be used in the operational area for a successful combat experience. So now, when is our government is going to increase the defense expenditure to the target of 3% of GDP? सर, माननीय, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि रक्षा का जो ट्रेंड है व्यय का, वो उत्साहजनक नहीं है। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय बहुत ही वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं जिनसे हम सीखते भी हैं, सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए ही अभी केंद्र के मंत्रालयों में सबसे अधिक व्यय बजट रक्षा मंत्रालय का है, सबसे अधिक है मान्यवर। 2013-14 में रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए था और आज दोबारा लेट मी से प्लीज, आज दोबारा 5.25 लाख करोड़, यानी कि 5,25,000। हाँ, 5 लाख, तो ये दुगना हो गया मान्यवर। तो कमी तो कहीं नहीं है। सर, मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सिपरी के बारे में सभी साथी हमारा जानते हैं। सिपरी ने 3 चीज इतनी अच्छी बोली हैं, मैं सारे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सिपरी हमको सर्टिफिकेट दे रही है, वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उनके अनुसार भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर यूएसए है, दूसरा चाइना है, तीसरा भारत है जो रक्षा बजट में खर्च करता है मान्यवर। तीसरे नंबर पर हम हैं। और दूसरी बात ये कही है सिपरी ने कि भारत ने 211 से लेकर 2020 के बीच में 2020 के बीच में 76% अपना बजट बढ़ाया है। और ये भी मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मान्यवर कि 2011 से 2020 के बीच में पूरी दुनिया में केवल 9% बजट बढ़ा है। कहां हम 76 पर और दुनिया 9% पर। इसलिए मैं बताना चाहता हूं मान्यवर कि कहीं से कहीं तक कोई कमी इसमें नहीं है। तीसरा, सिपरी ने एक बात और कही है मान्यवर 2020 में कि भारत एक्सपोर्ट करने वाले देशों में 25 नंबर पर खड़ा हो गया। पहली बार जब से माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से हम
पहली बार खड़े हुए हैं मान्यवर। इसलिए कहीं से कहीं बजट कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि बजट कम हो रहा है, टोटलिटी में तो हम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन प्रतिशत में अगर कहीं पर लग रहा है तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम रिवाइज बजट लाते ही हैं। आप जानते हैं सप्लीमेंट्री बजट आता है, तो हमने अभी पिछले दिनों में कैसे मिला है, मैं 3 ही सालों का आंकड़ा बताता हूं मान्यवर। 2019-20 17 करोड़ 80,931 और फिर 2020-21 13 करोड़ 358.06 करोड़, 2021-22 24 करोड़ 6,887.92 करोड़। यानी कि अगर कहीं कमी भी होती है तो तत्काल प्रभाव से वित्त मंत्रालय स्वीकृति देता है। कोई रुकावट ही नहीं है रक्षा के बजट में। जो हमको चाहिए, जितना चाहिए, जिस चीज के लिए चाहिए, वो मान्यवर हम देते हैं, इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है। रक्षा मंत्री बालू जी, आपका सप्लीमेंट्री पूछोगे पहले, रक्षा मंत्री जी पूरा जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, हमारे सहयोगी श्री अजय भट्ट जी ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और बिल्कुल कम्प्रिहेंसिव एक रिप्लाई जैसी होनी चाहिए वैसी रिप्लाई इन्होंने की है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर 2000 में एक कारगिल रिव्यू कमेटी जो है बनाई गई थी और जिसने कि बहुत ही एक कम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें इस कमेटी में सेना के जो प्रेजेंट हमारे ऑफिशियल्स हैं वह मौजूद थे, यंग सर्विसमैन यह भी उसके मेंबर थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, डिप्लोमेट्स थे, सारे लोग इस कमेटी के मेंबर थे। बहुत ही गंभीरता पूर्वक इन्होंने यह विचार किया कि यह डिफेंस में बजट एलोकेशन जो होता है वह किस रूप में किया जाना चाहिए। उस समय भी कुछ लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि जीडीपी का सर्टेन रेशियो होना चाहिए, लेकिन इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि इस कमेटी ने कहा कि डिफेंस के लिए जीडीपी के किसी फिक्स परसेंटेज के एलोकेशन की जरूरत नहीं है। यानी इस जीडीपी के किसी फिक्स परसेंटेज के एलोकेशन की रिकमेंडेशन इस कारगिल रिव्यू कमेटी ने नहीं की थी उस समय भी। और साथ ही यह कारगिल रिव्यू कमेटी ने यह भी कहा था कि हमें यह देखना चाहिए कि डिफेंस पर हुए हर 1 रुपये का खर्च हमें खर्च हुए हर रुपये पर कि हमको एक मैक्सिमम वैल्यू मिले। यह बात कारगिल रिव्यू कमेटी ने कही थी और इसके लिए हमें अपने खर्च को प्रायोरिटाइज करना होगा, फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर करना होगा और डिफेंस प्रोडक्शन में इफिशियंसी हमको लानी पड़ेगी। यह कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन थी और उस रिकमेंडेशन में जो कुछ भी कहा है कि फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर करने की बात, डिफेंस प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लाने की बात, वह सब हमारी गवर्नमेंट इस समय हमारा मंत्रालय कर रहा है। यार बालू जी। Sir, US is spending about 3.4% of GDP and Russia is spending about 3.9% of GDP, whereas India is only 2.33. When comparing to all the size of the countries, all the 3 countries, is it not necessary to increase the combating capability of our country to that level at least, on par with Russia and US? It's not necessary. So all these defense experts and analysts, they have definitely they have recommended the combating capability of India should be enhanced to that level. That is why modernization and going for the sophisticated equipment, technologies are necessary. So the defense expenditure has to be increased. That is my contention, sir. सर, कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। देश की सीमाएं चाक चौबंद हैं और जैसा कि अभी लेह लद्दाख की बात आई थी कि कमजोर है, कहीं पर है, कहीं नहीं है। आज हमारे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा उठा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से देश सुरक्षित है, कहीं से कहीं तक नहीं है। और सेना का आधुनिकीकरण हम कर ही रहे हैं। हमने 2013-14 से 22-23 तक इसमें किए जा रहे व्यय में 76% की बढ़ोतरी करी है। 76% की बढ़ोतरी कोई कम बढ़ोतरी नहीं है मान्यवर। और पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो दुनिया 9% खर्च कर रही है और हमने उसमें 76% खर्च किया है, दुनिया के सामने रिकॉर्ड है। इसलिए कहीं से कहीं जो चिंता आपकी है वो चिंता हमारी है, लेकिन चिंता का निराकरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने देन एंड देयर
कहा गया है कि जो जैसे है जहां पर हैं वहां पर आप अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए। गलवान आपने देख लिया है, कई घटनाएं आपने देख ली हैं, जो भी हमारी स्ट्राइक से हुई हैं आपने उनको देखा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक से हो कुछ और भी हो। तो इसलिए आज दुनिया हमारा लोहा मानती है और आप देख रहे हैं आज जगह जगह कहीं भी कुछ होता है तो प्रधानमंत्री जी की तरफ दुनिया की नजर जाती है। इसलिए कहीं कोई कमजोरी नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। Thank you, sir. Sir, in the reply, there is talking about expenditure. The MOD and all our scientists have done wonderful work in the defense, especially our PSUs and the scientists. Especially BrahMos is one of the finest example which makes all of India proud, sir. I would just like to ask that during this tenure, there's a lot of discussion about strategic partnerships. And in Atmanirbhar Bharat, which is a wonderful scheme, I don't think anybody would object to it. A lot of Indian companies have shown a lot of interest in this strategic partnership. To give a small example is Baba Kalyani's company, which also has a big presence in my constituency. But somehow we still are depending on foreign partners and not on Indian indigenous production. So what more will government do to help such good strategic partners who are Atmanirbhar in India and are waiting for the honourable government and the ministry for orders? So if you could kindly say something and for encouragement. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, समझा दो आज। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा जो कैपिटल बजट है उसमें हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है कि उसका 68% जो है केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर खर्च किया जाएगा। यह फैसला हमारी सरकार ने किया है और जो रेस्ट अमाउंट जो बचता है उससे आवश्यकता पड़ी तो एक्सपोर्ट करेंगे। और लगभग 309 ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारे में हमने यह डिसीजन लिया है कि हम किसी भी सूरत में एक टाइम लिमिट निर्धारित की है। कुछ 24 के बाद, कुछ 25, 26, इसके बाद किसी भी सूरत में हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि भारत में ही पूरी तरह से इंडिजिनस तरीके से वह सब सारे आइटम्स तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 326 श्री गुमान सिंह दामोर। 326 जवाब सभा पटल पर रखा सर। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और हमको इसका लाभ कोरोना काल में मिला है। मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्रालय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीन ज्ञान है और हम इस ज्ञान का उपयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से ज्यादा करना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों में और विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में कई व्यक्ति पीढ़ियों से वैद्य का काम कर रहे हैं और उन्होंने कोरोना काल में कई लोगों की जानें बचाई है। वे स्किल्ड हैं, परंतु उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ऐसे वैद्यों का पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी और उनको विधिवत चिकित्सा की अनुमति देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय संसद ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में आज उन्होंने उठाया है, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय संसद एक डॉक्टर भी है, प्रतिष्ठित डॉक्टर है और उन्होंने अच्छा, दो है ना, सॉरी मैं क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उन लोगों का पास अनुभव है और सही सवाल उन्होंने लाए हैं, क्योंकि हमारे देश की प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति का शक्ति इतना दिन तक हम लोगों ने महसूस नहीं किया था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आयुष को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया और उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया, सिर्फ एक दिन में एक स्कीम अनाउंस किया उसका बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं, निरंतर कोशिश जारी रखा, जिसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान
बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम सबको, इस सदन को गर्व महसूस करना चाहिए, होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए। और माननीय संसद ने जो सवाल की है ये सही है। जो भी हमारे हीलर्स है, सदियों से परंपरागत पद्धति के द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सेवा करते आए हैं, जो प्रैक्टिशनर है, इनको सही मान्यता देना चाहिए। ये मैं आपका साथ सहमत हूं और इसका काम शुरू हो रहा है। हर प्रदेश को ऐसे ही कहा गया है कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए, जिसको आज तक स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने देर रात को भी कोई फैमिली का कोई संकट होता है स्वास्थ्य का, तो प्राचीन पद्धति के जरिए उस फैमिली को राहत देते हैं, तो उनका निश्चित रूप से सूची तैयार हो जाना चाहिए। मैं आपका पास सहमत हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे जंगलों में बहुत औषधियां हैं और हम उन औषधियों का बराबर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। अभी भी हम जो औषधियां बनवाते हैं वो 1940 और 1945 के नियम के अनुसार बनाते हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने का है। अब बहुत परिवर्तन आया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या हम राष्ट्रीय नीति तैयार करेंगे ताकि हमारे वनों में जो औषधियां हैं उनका हम अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो भी स्कीम है, वन धन योजना, इसके आधारित जो जंगल में हमारे मेडिसिनल जो प्लांट है इसका कलेक्शन किया जाता है, आपको भी मालूम है। तो ये बात सही है कि हम लोगों को कन्वर्जन मोड में इस चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आयुष मंत्रालय, एग्रीकल्चर मंत्रालय, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय और साथ में ट्राइबल मंत्रालय, हम एक साथ मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में निश्चित रूप से हम कदम उठाएंगे। श्री ढाल सिंह बिसेन। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से मंत्री जी ने उत्तर दिया और दामोदर जी ने प्रश्न पूछा, सम्मिलित प्रश्न था। मैं इस प्रश्न के माध्यम से आयुर्वेद जगत की जो महत्ता है इसको प्रतिपादित करने के लिए माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब दिया, उसके लिए मैंने धन्यवाद देते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इसके पीछे मूल कारण है कि आज जो भी हमारी आयुर्वेद औषधियां हैं ये लगभग विलुप्त हो रही है और जंगलों के अंदर है। और अभी भी जानकारी में आ रहा है कि 85% इसका कलेक्शन टोटल जंगल से हो रहा है। और जिस तरह से मोदी जी की कल्पना है कि हम खेती को बढ़ावा दें, खेती को आय दुगनी करें, तो जितनी विलुप्त औषधियां हों उनका संरक्षण करने के लिए और औषधियों की सुनिश्चितता करने के लिए अभी हो ये रहा है कि हम जड़ी बूटियों को पैदा करने के लिए वन विभाग को हम के ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए और जड़ी बूटियों की सुनिश्चितता के लिए और वनों पर ज्यादा आश्रित ना होते हुए इसकी पूरी सुनिश्चितता कराने के लिए ऐसी नीति बनाए जिसके कारण वन विभाग, पर्यावरण विभाग, किसान और हमारा आयुष विभाग मिल करके नीति बनाए और उत्पादन और मांग के आधार पर किसानों को जागृत करे, किसानों से डिमांड दे। और अभी सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं है अध्यक्ष महोदय कि देश में औषधियां कितनी लग रही हैं। आज कोरोना के बाद लग रहा है कि विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ी है। तो एक आंकड़ा भी देश के सामने आए और कितनी मांग है और कितनी हम पूर्ति कर रहे हैं, इसकी सुनिश्चितता करने का काम एक पूल का काम विभाग करे और ताकि किसान भी इसको पैदा करें और जंगल की औषधियां सुरक्षित रहे और जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए विभाग सहायता देता आपने बताया है, पर 2021 के बाद देना नहीं बताया है। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आगे भी इस योजना को आगे लागू रखें ताकि किसान का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, सामान्य खेती से उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। पर अभी केवल वन विभाग देखता है, तो आप इसको लीड करते हुए करेंगे क्या, केवल माननीय मंत्री जी तक जाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की हॉर्टिकल्चर विभाग की द्वारा इन विषय पर हम लोगों ने बढ़ावा दी है। और जैसे आपको भी मालूम है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ मेडिसिनल हार्बल का खेती किया जाता है
और लोगों को इस विषय पर प्रसूहित किया जाता है और नर्सरी हो, हर्बल गार्डन हो, इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान जा रहा है। मुझे लगता है कि अगले दिनों में आपकी जो सवाल है, आपके मन में जो शंका है, ये आपने सही कहा है कि हमारे कुल मिलाकर देश के अंदर जितना भी मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज है, इनका सही सूची प्रस्तुत होना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि हमारे शक्ति को हमें खुद समझ में आए। तो मुझे लगता है कि अपने विभाग के द्वारा जो भी हम लोगों ने अब तक कदम उठाया है, कुल मिला के 242 यानी कि 242 हम ऐसे मेडिसिनल स्पीशीज को विशेष रूप से हमें आगे बढ़ाया है, जिसका आज मार्केट मोर देन 100 मेट्रिक टन का उसका वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगले दिनों में आपके सुझाव के मुताबिक हम निश्चित रूप से अगर कहीं और भी करना बाकी है, इन चीजों को हम विशेष रूप से मान्यता देंगे। राम हरिदास। Thank you, sir. Whether the government has any plan to open exclusive specialized Ayurvedic hospital and research center under Ayush Ministry, just like that aims in the state level. Thank you, sir. As you know, we have Center of Excellence in the sector of Ayush. Many important institutions, right from All India Institute of Ayurveda Sciences from Delhi to the different part of the country. But in the near future, growing the demanding situation, definitely will put a thought into it, and as per the proposal sent by the respective state government and in consultation with state government, definitely in the near future will examine your proposal. Thank you. Question number 327, Shri TRVS Ramesh. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 328। आप पूछना चाहते हैं? सर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षेप में पूछूंगा। सर, दिसंबर महीने में आपकी अनुमति से कोविड पे यहाँ पे चर्चा हुई थी। उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया और उस समय मैंने मंत्री जी से पूछा कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, उसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप है, उस गैप को वो क्यों कम नहीं करते। उस समय कोई उत्तर नहीं आया है, लेकिन आज सूत्रों से पता चल रहा है कि सरकार इस नजर में सोच रही है। तो मेरी दोबारा मांग रहेगी कि ये सरकार आज मंत्री स्पष्ट करे, क्योंकि दिसंबर महीने में हमने जब चर्चा हुई उस समय पूछा बूस्टर डोज के बारे में, उस समय पूछा 18 साल से कम आयु के वैक्सीन के बारे में, पर मंत्री महोदय से उस समय कोई उत्तर नहीं आया और 2 हफ्ते बाद सरकार ने नीति निकाली। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय पार्लियामेंट में ये सबके सामने स्पष्ट करे कि कोविशील्ड के जो पहले और दूसरे वैक्सीन पे जो गैप है, उस गैप को कम करने के लिए आप अपने सरकार की क्या नीति रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, कभी जो भी इंफॉर्मेशन है और जब सदस्य ने पूछा है तो जो स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार हमने रिप्लाई दिया है। वैक्सीन कब देना, किसको देना, कितनी आयु को देना, वो निर्णय साइंटिफिक होता है, हम नहीं करते हैं, वो साइंटिफिक एक्सपर्ट कमेटी करते हैं। जब जब हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है, उसके अनुसार हमने 18 एबोव को वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव किया था। उसके बाद कमेटी ने हमें रिकमेंडेड किया तो हमने 15 एबोव को किया और आज 12 एबोव देश के बच्चे को टीका लग रहा है और आने वाले दिनों में एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर हम करेंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्रीपद यशो नायक। The paper mentioned against my name at serial number 2 of today's revised list of names. आइटम नंबर 3, श्री SP सिंह बघेल। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो ये जो SP सिंह बघेल के नाम पे क्रम संख्या 3 पर जो अंकित दस्तावेज है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री अजय भट्ट। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 5, श्री भगवंत कुब्बा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज के संशोधित
कार्यसूची के क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का अनुरोध करता हूं। Item number 6, Dr. Rajkumar Ranjan Singh. Honorable Speakers, with your permission, I raise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Dr. Bharti Pawar. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Item number 8, Sri Manju Pada Mahendra Bhai. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Item number 9, Sri P.P. Chaudhary ji. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the statement showing further action taken by the government on the observations recommendations contained in the 7th report of the committee as listed against my name at serial number 9 in today's order paper. Item number 10, Sri Ramesh Vidudi ji. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूची पर पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 11वां और 12वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। Item number 11, Savanand Sonwal. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay a statement correcting the reply to unanswered question number 657 answered on 4th February 2022 regarding Ayush colleges and institutions. Item number 12, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 28th March 2022, will consist of, number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration passing of the Finance Bill 2022. Number 2, consideration and passing of the Constitution's Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 with respect to State of Tripura. Number 3, consideration and passing of the Constitution Scheduled Caste Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022 with respect of State of Jharkhand after it is passed by Rajya Sabha. Number 4, considerations and passing of the following bill after their introductions. Number 1, the Constitution's Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order, Second Amendment Bill 2022 with respect to State of Uttar Pradesh. Number 2, the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Number 3, the Indian Antarctica Bill 2022. Number 4, the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. Thank you, sir. Item number 13, Sri Mansukh Mandavia ji. Sir, I rise to move that the pursuance of Section 17(2)(c) of the Surrogacy Regulation Act 2021, the members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 women members from amongst themselves to serve as a member of the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, subject to the other provisions of the said Act. प्रश्न ये कि मनसुख मांडविया जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 श्री नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री एन के प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Speaker, sir. I rise to oppose the introduction of the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Sir, on the following grounds. Number 1, the proposed amendment bill encroaches into the legislative powers of the Assembly of the National Capital Territory of the Delhi Legislative Assembly, which is against the federal principles of our Constitution
That is a basic feature of our constitution, to have federal principles, and we are following always the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is always speaking about the cooperative federalism. Is it the cooperative federalism? Because Delhi Municipal Corporation Amendment Act was passed by the Union Territory Legislative Assembly of Delhi in the year 2011. And after that, that is trifurcating the municipal corporation into three. Now the parliament is coming, the government of India, the central union government is coming with a legislation so as to unify the three municipal corporations which comes under the domain of the Legislative Assembly of Union Territory of Delhi. Sir, I do accept the fact that constitutionally the Union Territory is having the ample authority and power to legislate any matters which is in respect of the Union Territory. Absolutely, Union government is having the authority, but this is disrupting the Legislative Assembly. The will of the people is the Legislative Assembly. They have passed an act and it is in force trifurcation of the municipal corporations. Now Union government is coming with a legislation so as to unify it. Then what is the will of the people of the Delhi Legislative Assembly? That is why I am saying that it is totally against the basic feature of the constitution. That is, sir, 1 second. Cooperative federalism. And the second objection is regarding clause 7(2) of the bill empowers the government to make rules of the employees of the corporation, but the bill lacks a memorandum delegating the legislation. But today morning I have received the copy of the memorandum of legislation, but it was not circulated along with the bill. That was a second objection, that is overruled. And the third objection is regarding the provisions of the amendment bill is complex drafting and it is not specific. In the legislative drafting, each and every provision should be specific. Sir, for example, clause 2 of the bill, if you see, it is being generalized because wherever the grammatic sense of the definition is required, there the corporation will be named as Delhi. It is not specific, it is complex. These are the three objections by which I oppose the introduction of this bill. Thank you very much, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं संक्षेप में बड़े पॉइंट्स रख रहा हूं। इस बिल का मैं विरोध करता हूं इंट्रोडक्शन का, क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचा पर एक प्रहार है। किसी प्रकार की कंसल्टेशन टॉक्स ये केंद्र सरकार ने इस बिल लाने से पहले नहीं की है, ना राजनीतिक दलों से की है, ना राज्य सरकार से की है, ना किसी उन्होंने विचार विमर्श। ये बस अपने विफलताओं को छुपाने का ये एक प्रयत्न है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि 250 सीट का इसमें उन्होंने नियम 2050 वार्ड का इन्होंने एक सीमा बांधा है। 2050 का ये सीमा ये लेजिस्लेशन में बांध नहीं सकते, क्योंकि सीट और वार्ड्स आबादी के अनुसार होना चाहिए, कोई नियम नहीं डाल सकते। तीसरी बात यह है कि इन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर डाला है, ये पूरी तरीके से एक स्पेशल ऑफिसर संघीय ढांचा के खिलाफ है। 2012 में ये एनडीएमसी ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्राइफॉर्केट हुआ था और इसलिए हुआ था ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो, डिसेंट्रलाइज हो, और इसी के आज विरोध में ये बिल जा रहा है। इस कारणों के लिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं रूल्स 272 प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस के तहत मैं इस बिल के इंट्रोडक्शन के विरोध में उठा हुआ हूं। मान्यवर, मैं दो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के 243U और pertaining to the terms of the municipal elections और दूसरा आर्टिकल 246 pertaining to the legislative competence of the house, इन दोनों मुद्दे पर मैं यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। सर, आर्टिकल 243U ये स्टेट करता है कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी वो अपने तत्समय के कार्य को पूरा करने तक उसके 6 महीने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। इस केस में 6 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं हुआ और चुनाव होने तक जब तक वो अपने विधिक कार्य में बनी रहती है, उस समय कोई भी संशोधन बिल में नहीं लाया जा सकता और उस संशोधन का म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने चुनाव भी नहीं करवाया और अब बिल लेकर के आ रहे हैं चुनाव को रोक करके, ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से गलत है। दूसरा पॉइंट माननीय अध्यक्ष जी, सर एक सेकंड, माननीय सदस्य विदुरी जी, सर एक सेकंड सर, माननीय सदस्य एक मिनट से आते हैं वो उधर का परिचय ना दे हमको।
आप मुझे उधर का परिचय मत दीजिए, आप मुझे वहां का परिचय मत दीजिए। अध्यक्ष जी आप कुछ बोल रहे थे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अपने कार्यशैली को थोड़ा सुधारिए बिधूरी जी। तो मैं आपसे इसीलिए बोल, उसका परिचय दीजिए, आप उसका परिचय दीजिए बिधूरी जी। हु आर यू? चलिए ठीक है, और तेज चिल्लाओ। आप अपने आचरण का परिचय दे रहे हैं बिधूरी जी। सर 1 मिनट माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। न तो आप बोल रहे हो जो रिकॉर्ड में जारी, बस ना आप बोल रहे हो। मैंने कल भी आप लोगों को आग्रह किया था, सदन की मर्यादाओं को ध्यान रखो। ये देश का सर्वोच्च उच्च सदन है। आप 1 मिनट, आपस में चर्चा एक दूसरे से चर्चा कर नहीं करना चाहिए, आपस में डिबेट करना चाहिए। और जिस नियम के तहत मैं आपको इजाजत देता हूं, वो नियम 72 भी पढ़ लेना चाहिए कि जब ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो आप डिबेट के अंदर जब बिल लाया जाए, पूरी डिबेट पर चर्चा कर सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन अभी इस विषय पर मुझे पता है ना, कानून मैं पढ़ रहा हूं, इस पर इतना सा कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर आप विचार कर सकते हो कि ये अधिकार संसद का, सरकार का है या नहीं है, ये बिल ला सकती नहीं ला सकती, इस विषय पर कानूनन रूप से आप पक्ष रख सकते हो। हाँ, आर्टिकल 243 में तो बता ही दिया, और जो अभी आदरणीय प्रेमचंद्रन जी बोल रहे थे, मैं उससे भी अपने आप को संबद्ध करता हूं। 2011 में सर ये जो है एनसीटी ने संबद्ध कर दिया ना मनीष तिवारी जी। सर 2011 में एक मेरी बात आ जाए। हाँ, 2011 में एनसीटी ने इन तीनों म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा था। ये अधिकार जो है दिल्ली विधानसभा का है कि वो इसको अब एक में जोड़ने का निर्णय ले या न ले। जब ये हाउस उस अधिकार का हनन करती है तो कहीं ना कहीं हम देश के फेडरल सिस्टम के ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपने मुझे इसका आप तो सदस्य सुप्रीम कोर्ट के लीडर वकील हो, आप तो शायद कानूनी बात करोगे। स्पीकर सर, बिल्कुल जो आपने आदेश दिया है उसका पालन करेंगे। मिस्टर स्पीकर सर, I rise to oppose the introduction of this bill on grounds that this House does not have the legislative competence to enact this bill on the following grounds. Mr. Speaker, sir, if you read the statement of objects and reasons of this bill, it says in 2011, the said act was amended by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi by the Delhi Municipal Corporation Amendment Act 2011, leading to the trifurcation of the said corporation into 3 separate corporations. Mr. Speaker, sir, the reason why this was done was because after Part 9A was inserted into the Constitution of India, with effect from 1st of June 1993, the power to constitute municipalities lies with the state governments in terms of Article 243P and 243R of the Constitution of India. Second, Mr. Speaker, sir, as per Article 246, read with 7th Schedule, Entry 5 of the state list, powers to constitute municipal corporations is with the states. Number 3, Mr. Speaker, sir, under the transaction of business rules of the National Capital Territory of Delhi, notified by the Ministry of Home Affairs, Rule 8, read with Entry 1 of Schedule attached, local self-government institutions and their functionings falls to the remit of the Government of Delhi. Number 4, Mr. Speaker, sir, under the allocation of business rules of the National Capital Territory of Delhi, notified by the Ministry of Home Affairs on the 1st of December 1993, entry 26 of those rules states that local self-government falls to the remit of the Department of Urban Development of the National Capital Territory Government of Delhi. In essence, what I am trying to say, Mr. Speaker, sir, that if any house has the legislative competence in order to unify these 3 municipalities, it is the Delhi Assembly and it is not this House. And this House cannot
after Part 9 was inserted into the Constitution of India, substitute itself for the Assembly of Delhi and pass this particular legislation in an illegal manner. This is a very serious constitutional issue. It is a transgression on the basic structure. It's a transgression on the constitutional provisions, and therefore I oppose the introduction of this bill. Mr. Speaker, sir, thank you very much. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय प्रेमचंद्रन जी, गगोई जी, माननीय रितेश जी, माननीय मनीष तिवारी जी बोल रहे थे। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं से भी यह भारत के संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन नहीं है और नहीं किसी फेडरल स्टेट के अधिकार का अतिक्रमण है। महोदय, अनुच्छेद 239 क के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने, उसका स्वरूप बदलने या उसका निरसन करने के लिए सक्षम है यह सदन। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय दिल्ली के नगर निगम का विकेंद्रीकरण हुआ था तो उसकी सोच यह थी कि दिल्ली के लोगों का विकास होगा, नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी, इनके कर्मचारियों का कल्याण होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 वर्षों का जो अनुभव आया है उसके आधार पर यह नगर निगम दिल्ली के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। तो उसमें इसका मूल जो उद्देश्य है और जिस उद्देश्य से कोई यह पूरा नहीं कर सका, दिल्ली वासियों को इससे बहुत नुकसान हुआ है। नगर निगम दिल्ली की नीति में एकरूपता, ठोस वित्तीय प्रबंधन, दिल्ली के विकास को गति तथा दिल्ली के विकास को गति के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सेवा स्थिति जैसी समस्याओं का समाधान होगा तथा नगर निगम के प्रशासन में भी एकरूपता आएगी। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि दिल्ली वासियों के यह हित में है, इसलिए इस विधेयक का समर्थन करें और सर्वसम्मति से पास करें। और हुआ भी है, मैं पहले ही बताया कि अनुच्छेद 239 क के अंतर्गत यह लाया गया है जो सदन को अधिकार है। प्रश्न है कि विधेयक को पूरे स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। कांग्रेस की फितरत है थूक के चाटना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। स्थापित कर दिया महोदय। जोशी जी, मैं एक ही अध्यक्ष जी, आज फाइनेंस बिल लगा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस जो है वो आगामी सप्ताह में किसी दिन ले लिया जाए और आज फाइनेंशियल बिल को पास करने की हम आपसे अनुमति और अनुरोध चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है अध्यक्ष जी। सभा की क्या सहमति है? Speaker sir, finance bill is the most important business as far as the budget is concerned. And passing of the finance bill on Friday, we know afternoon Friday is private members' business. And it is taking away the private members' business, number one. And passing of such a finance bill having serious ramifications passing on Friday within a limited time, it is not fair because there are ample time. 31st March is there, 4 days are there. So kindly let the discussion begins today and let it be voting on Monday. That is our humble submission because it is a very serious physical matter that is to be considered. Sir, BAC mein, it was decided in BAC that we will have the discussion today and complete it today. And if the members wish, then we can take the private member business in the next week, anytime. Apart from next Friday, even Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, anytime we can take that assurance from government side. We have already given it to you, sir. That is number one. Number two, on 1st of April, we want to introduce the finance bill and we want to implement and execute the budget. That's why we have requested even in the BAC
and your kind self had agreed, sir. And today we are requesting to dispose of to the next week. This today's private member business, we are requesting the postpone, not to cancel. Kindly cooperate. माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य 377 के सभी मामले सभा पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई है। टी.एन. प्रतापन, मानिकम टेगोर, बेनी बैनन, सीतारामया हरिदास, के सुरेश, नामा नागेश्वर राव। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। हाँ, गौरव गोगोई। अध्यक्ष महोदय, थैंक यू। सर, the price of petrol and diesel were hiked for the third time in a week yesterday. We don't know how many more hikes await the people of India, and people of India have just returned from Omicron-induced lockdown. They want an environment where they can do their business, but all these price hikes have increased the cost of business, especially the price of transportation, and this will lead to inflation. Inflation is already at 7%, and commodities, all commodities will be increasing. So we want this government to give a reply as to why for 137 days they managed to keep the prices stable, and now after the elections are over, now they're increasing their prices. So we want, if the same policy, status quo to be maintained, if for 137 days they could keep the price stable, why can't they do it now when the country is reeling under inflation? They're just coming under COVID. I want the government to give a specific reply on this issue, sir. सर निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मेरे यहाँ जो है एक बड़ी दुर्घटना हो गई सर, रात में 2 बजे साहबगंज में जो गंगा नदी है हमारे संथालपुरना में सर, वहाँ एक जहाज में 18 ट्रक डूब गए। और मैं आपको बताऊं, ये उठाने के पीछे रीजन ये है, संवेदना के पीछे सर, कि लगभग 100 लोग केवल मर ही नहीं गए, वो ट्रक इलीगल चल रहा है, वो जहाज इलीगल चल रहा है सर। और उस जहाज को चलाने के लिए नियम है कि सनसेट और सनराइज के बीच में जो है वो ट्रक नहीं चलेगा सर, वो जहाज नहीं चलेगा। लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री उस कंपनी के पार्टनर हैं, उनके जो पीए हैं उसकी दलाली कर रहे हैं, और इस कारण से सर ये इलीगल एक्टिविटी चलती है। जो बालू है, जो गिट्टी है, और जो लोग की हत्या हो रही है, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है सर कि वहां चूंकि मुख्यमंत्री खुद रोजगार कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उनकी सरकार को बर्खास्त करें और इसकी सीबीआई से इंक्वायरी करें कि किस आधार पर ये 100 लोग मर गए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं सर, और गरीब की रक्षा करना इस संविधान का हक है, इस पार्लियामेंट का हक है। यही आपके माध्यम से मैं इस देश को बताना चाहता हूं। लोकेट चटर्जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। কিছুদিন আগে বীরভূমের রামপুরহাটে যে ধরনের ঘটনা, নৃশংস ঘটনা, নরকীয় ঘটনা হয়েছে, আজকে বীরভূমে 10-15 জন মহিলা এবং শিশুদেরকে ঘরের তালা বাইরে থেকে বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেরে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তারপরে গেছেন, গিয়ে টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছেন যাতে আসল সত্য বেরিয়ে না আসে। এবং আজকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে রাজ্যের যারা মানুষ যারা চেয়েছিলেন সিবিআই, সবাই সিবিআই চেয়েছিলেন, তারা সিবিআই আজকে হাইকোর্ট দিয়েছে। এবং আমি অনুরোধ করব যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেন এই সিবিআই কে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে চ্যালেঞ্জ না করে, রাজ্য সরকারের মানুষের টাকা খরচা করে যেন সিবিআই নিয়ে চ্যালেঞ্জ না করে। ধন্যবাদ জানাবো রাজ্য সরকারকে। मैं आपसे एक गुहार लगाना चाहती हूँ कि आपके चेयर के माध्यम से सर, इस सभागृह की सदस्य होने के नाते मैं न्याय की गुहार आपसे ही लगा सकती हूँ। सर संक्षिप्त में बात करें आपकी। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है, अगर एक सदस्य होने के नाते अगर हमारे साथ महाराष्ट्र में इस तरीके से अगर व्यवहार होता है, जब हमने किसानों के आंदोलन किए सर, किसानों के हित में आंदोलन किए, कोई क्राइम ना करते हुए हमें पुलिस की गाड़ी में क्रिमिनल सर, क्रिमिनल जैसा बिठाकर गाड़ी से लेके सीपी कमिश्नर ऑफिस में लेके गए और वहां पे सीढ़ियों पे बाहर बिठा के हमारी बेइज्जती की गई, मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे बदतमीजी से बात की गई। ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है।
सर मैं आपको बताना चाहती हूँ 16 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाने के बाद सर आधी रात को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया जाता है और जबरन 100 से 150 पुलिस हमारे घर में आती है। मेरे बुजुर्ग माता पिता वो घर में रहते हैं, मेरे छोटे बच्चों के सामने पुलिस वाले बोलते हैं ये ऊपर से हमें आदेश आया है, अगर तुमने हमारी बात सुनी ना तो यहाँ से घसीट के तुम्हें कमिश्नर के ऑफिस में और जेल में डाला जाएगा। सर सर लास्ट सर 1 मिनट सर और सर 1 मिनट और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके ऊपर अत्याचार करके 307 का गुना उन पे लगाया। विधायक रवि राणा दिल्ली में रहने के बाद उन पे 307 गुना दाखिल किया सर। और 2 दिन पहले मैंने एक सीनियर कॉलीग को हमारी आरती सिंह के बारे में उसकी बाजू लेते हुए सुनाई दिया सर 1 मिनट लास्ट उनकी तारीफ सुनाई दी। उनका कोई केस दिल्ली में आया है, अगर महिला की बाजू ले सकते तो ये भी एक महिला ये सदस्य की एक सदस्य रहने के नाते मैं आपसे विनंती करती हूँ सर उन पे कार्रवाई की जाए। और ये पेन ड्राइव सर ये पेन ड्राइव में उनके पूरे पुरावे हैं सर, ये फोटो है आप देख सकते हैं जिस तरीके से मुझे एक गाड़ी में बिठा के यहाँ से कमिश्नर के ऑफिस लेके गया। उस करप्ट सीपी पे कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी लगनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए सर, पूरे पुरावे नहीं सर। Education Minister through you, sir, the new Kendriya Vidyalaya in my constituency, Kottara, Kollam district, Government of Kerala has already transferred 5 acres land of Kendriya Vidyalaya Sangathan. The temporary accommodation has also been handed over to Kendriya Vidyalaya. The regional commissioner of Kendriya Vidyalaya has also inspected along with the central PWD officers. Every process is completed, but Government of India has not sanctioned the project. The people of my constituency are waiting for this Kendriya Vidyalaya last 10 years. I would like to request Honorable Minister through you, sir, whether this Kendriya Vidyalaya should be started immediately. Item number 16 with Videk 2022, Shri Gaurav Gogoi ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। I am going to present my remarks on the finance bill, which is a money bill, and it has sections related to the direct tax, indirect tax. 1 second. Whatever honourable member she has raised the issue, we will bring it to the notice of the concerned ministry. Kindly let her take her seat. I am talking about her now. I request her to kindly cooperate. I will bring it to the notice of the concerned ministry. You are not responding. Why? एक मिनट मंत्री जी आप बोलना चाहती हैं कुछ? आप बोलना चाहती हैं कुछ? मूव कर दें आप। नहीं, he didn't call me for that. I started speaking. Sir, I move that the bill to give पहले की कार्रवाई को समाप्त कर दें, दोबारा से गोगोई जी को बुलाने की इजाजत देंगे। I was wondering, sir. Sir, I rise to move that the bill to give effect to the financial proposals of the central government for the financial year 2022-23 be taken into consideration. माननीय सदस्य ने बैठा हुआ अब ठीक है ना, आपको थोड़ी पैरवी के लिए कहा है माननीय सदस्य की, नहीं गलत, आप सीनियर बनते ऐसे मत कीजिए। श्री गौरव गोगोई जी। Thank you, Speaker, sir. I rise to speak on the Finance Bill 2022, which is a money bill, and in it there are sections related to direct tax, indirect tax, custom duty, but before I raise this issue, so we must understand the context in which we are today. Today, because of repeated COVID-induced lockdowns, the country is recovering, but the recovery is unequal. The gap between the poor and the rich have only increased. The gap between the haves and the have-nots have increased. The government promised a V-shaped recovery, but instead we are seeing a K-shaped recovery. And this problem is extremely, that the inequality in this country is increasing. Now today,
the top 10% earn 20 times more than the bottom 50%, while the top 10% and the top 1% hold respectively 57% and 22% of the total national income. The bottom 50% share has gone down to 13%. Sir, there are enough examples in history. Yes, please, please. Honorable member, please. Sir, there are enough examples in world history where countries are experiencing record inflation, witnessing record unemployment, are seeing record that this government is giving to the people of India. There is record unemployment. Please. Don't worry, our supreme leader is there. Please, Honorable. Prices are rising. Jingoism is the only antidote that this government is offering to the poor. Whether there is record unemployment, whether there is high inequality, whether there is inflation, people are expected to fair atmosphere, not always under the burden of high inflation and high fuel prices. And it is, sir, a bit ironic as to the answer that this government or its ecosystem or its spokespersons are giving on fuel prices. They are saying that the fuel prices are bound to happen. Why? Because there is a conflict in Ukraine. So I remember Prime Minister Modi ji speaking in Parliament on his during the last speech he made. And in that, sir, there was a point, and I was listening to him very carefully. He referred to Pandit Nehru. And he referred to Pandit Nehru, saying that, can you imagine that Pandit Nehru once blamed an international conflict happening in a different part of the world for the economic problems of India. And he smirked when he made that remark. Now today, what is happening? Now today, isn't Prime Minister Modi making the same argument that because of Ukraine, we have no choice but to increase the fuel prices? But the counter is, there are two counters, that if for 137 days, the Ukraine conflict did not happen last week or did not happen 3 days ago. The Ukraine, US, Russia, European conflict has been going on since December. Russian troops were on the border of Ukraine since December. It's been more than a month since military escalation has happened. For 1 month, they could keep their prices stable. What has changed now? What has changed? That for one last month, since the beginning of the conflict, since the beginning of the Russian troops being on the border, to the beginning of the bombardment, to the Ukrainian refugees fleeing to different parts of Europe, that time you did not increase the prices. Why now? Just because elections are over. That's how you repay the people who put their faith on you. I congratulate you on their stupendous victory, but that doesn't mean that you take people's vote for granted. That doesn't mean that you get a remit to continuously put more and more burden on the poor, on the middle class, on the unemployed. So therefore, I feel that while we talk about the finance bill and the taxes, they're extremely important, we must talk about this context. Now, I don't want to be only critical of this government. There are certain measures in the finance bill which we welcome. Now, they have given a tax exemption for amounts related to COVID-19 and medical treatment. We welcome that. They have said that there's going to be they have identified
under Section 37, that the IT Act allows for certain expenditure which is incurred for the purposes of business, except where the expenditure is incurred for purposes that qualifies as an offence or is prohibited by law. Now, in this finance bill, they have ensured that gifts and expenditure incurred on travel, hospitality and conferences, they will no longer be exempt. They will also be taxed. And that's a welcome step that I feel the government is doing. There might be resistance from the pharmaceutical industry, but I hope that the government, in its sagacity, will manage to tackle with the pharmaceutical industry, because we all know, sir, there is a lot of examples in the world that how big pharma companies push certain procedures, push certain medicines through doctors, and in the end, the financial burden comes on the poor. So therefore, there's enough evidence, and I welcome this step. At the same time, sir, there are certain steps which need more clarity. Now, on virtual digital assets, they have introduced a tax of 30%. At the same time, sir, while this measure is intended to disincentivize, discourage people trading or occupying or holding cryptocurrencies or NFTs, the government still is sending out mixed signals. And the government should send out a very clear signal. How are you going to define crypto? Is it an asset? Is it a currency? Is it something that can be speculative? We are waiting for the legislation and for the clarity to come. And why it is important for the clarity to come sooner rather than later? Because so many people in India are trading in cryptocurrencies. So many exchanges have been set up. And so normally when there is an IT technology-based change that takes place, we welcome it. And Indians are the first to welcome. Indians are the first to adopt it and innovate it and put an Indian context to it. And therefore, already there are record volumes of crypto-based transactions. Already a lot of young IT engineers are involved in this. But the government, while in putting a 30% tax, while they're coming out with further and further clarifications that it can't be offset, the losses cannot be offset. But I appeal to the government to have two approaches in mind. One approach should be that if you want to treat crypto as a sin and you want to have a high tax on it and you want to eventually ban it, then be specific and have that. But bear in mind that a lot of people would indulge in crypto and indulge in these operations in the dark net, and all of these operations will go underground. You are supporting cryptocurrency? No, I'm saying I'm asking the government to be clear, to have a clear approach. Clarity. Have clarity. Okay. And I'm asking for a policy to come out sooner rather than later. And secondly, I'm asking, sir, at the same time, I hope the government doesn't change its mind, because there are parts of this world, I'm just outlining the complexity of the issue. Because there are parts of the world, there are even countries which are adopted crypto as officially. Different countries have come out with regulations. Japan has one set of regulations. America has another set of regulations. So the government needs to have two approaches. One, if there is a ban, what is going to be your approach so that crypto doesn't become the route for money laundering or illicit activities or drugs or crime? B, if they do want to regulate it, then what are the lessons that we can learn from America and Japan from elsewhere? But that is, I rest it over here. But nonetheless, sir, point being, crypto is a risk at this moment, is a risk. And crypto is not the only risk that is in today's market. Sir, the stock market, sir, if you would see, over the last 2 years, especially during pandemic, there have been a lot of new investors in the stock market. Many say that while for people who are sitting in their homes
for 2 years as a way to occupy themselves, as a way to counter the low interest rates from banks. A lot of young people, a lot of people, middle-class people, a lot of women, elderly people have rushed into the stock market. Now, the stock market is not simple. It's complicated. It has its own rules. It has its own laws and principles. And the government must be concerned, because right now there are so many commercials on YouTube, people selling their advice and encouraging people to invest in the stock market. And there are a lot of new investors. Now, that could be another bubble. That could be another bubble that is waiting to burst. And therefore, I request the government to be also take into account of this matter. There is, I already mentioned inequality, I already mentioned crypto, I already mentioned the stock market. What is also happening, sir, that we are seeing that one of the aims of this government, and any government, is to widen the tax base. We want more and more people to pay their taxes, and they have certain clarifications which have come. There are certain clarifications which have come on direct tax, on AOPs and other things. But what we are also seeing, sir, is an exodus of high net individuals. Now, we know that most of the income that comes under income tax comes from high net individuals. But what is happening, sir? We are seeing that since 2019, 7,000 high net worth individuals have left the country. A report says that $23,000 millionaires have left India between 2014 and 18. Now, we should be worried, sir. What is this ecosystem in India that is pushing some of our most highest earners, most productive people who are heads of big enterprises, the heads of big business? Why are they leaving the country? What is it in the ecosystem? Some have voiced that it is because of the fear that they feel. Some have voiced because it is of the unfair pressure that comes from various arms of this government. But I hope that this government seriously introspects, because that is not the reputation we want. We want that whoever you are, you might be a high net worth individual, you might be a salaried class, you will not be unduly harassed by the government. You will not be unduly pressurized by any extension of our government, and I hope that they would take into account. They would also take into account, sir, that now with Ukraine and inflation assumed to rise at 7%, various rating agencies are going to have brought down their growth outlook. So what is their plan now? The government should come up with a clear white paper as to how they manage to ensure that our fiscal fundamentals, our financial fundamentals remain stable. That clarity must come out. Because it seems that every month, because of certain external factors, our growth outlook keeps changing, and the government sometimes, I can say, is caught on its back foot. This government, in its taxation bill, this finance bill, has also got some sector-specific amendments. They've got amendments on handicrafts, apparel, leather, electronics. They've reduced the import duties for mobile phones. They've got import duties being reduced on certain chemicals such as sodium cyanide, methyl alcohol, acetic acid. They've also raised the customs duty on umbrellas to 20%, and they're also revising their anti-dumping duties on steel, considering the high cost of steel. So just on steel, sir, because it's such an important sector, I do hope that the Honorable Finance Minister, in her reply, would specifically state that whether this anti-dumping duty which is being revoked, whether that's a temporary measure or it's a permanent measure. Because the prices of commodities, and especially that of steel, which are though nonetheless high, but at some point are likely to come down as well. But if you keep having an unpredictable flip-flop policy on commodity by commodity, that sends out a very wrong signal. Sir, gems and jewellery, the customs duty has also been reduced to 5%. And now on fuel, they want to encourage blended fuel, and therefore they are imposing an excise duty of 2 rupees per litre on blended fuel.
Now, sir, this is an important matter. I understand that by introducing blended fuel, they want to overall, they want to reduce their expenditure. But this is not the way to do it, sir. This kind of tax that you're doing, this kind of instrument, that if you want to encourage blended fuel, you will make unblended fuel. That does not work, sir. You have to create the ecosystem. Understand, talk to the OMCs, talk to the petrochemicals, talk to the retail outlets, talk to the pump outlets. There's a lot of resistance because the supply chain has to be set up. Remember, sir, what happened with GST? A hasty implementation, not taking into account the ecosystem, not orienting them, did more damage than benefit. And similarly, I advise this government, as they're pushing for blended fuel, I would ask this government to take back this excise duty of 2 rupees per litre on unblended fuel. Sir, this government has also brought out something on the SEZs, and I hope this government would give us more details on that. On GST, sir, the position of our states is extremely doubtful and extremely vulnerable. They rely a lot on the GST compensation. And the timing of GST compensation has been extremely poor. It is completely at the hands of the central government. They release it when it suits them, but that does not suit the state government. State governments have to pay salaries. State governments have to fund their social welfare schemes. State governments have to put in money for development. Now, on this GST, they will say it's the GST Council. But, sir, I would request this government, there have been enough, both within and outside. State governments have continuously raised their views that the GST compensation is not released adequately, not released on time, and also, sir, under the Act, the tenure for GST compensation is coming to an end. So my request to this government is that you have extended the exemptions under this bill to startups. You have extended the exemptions given to companies for manufacturing by 1 more year. I would request this government to again extend the tenure for GST compensation and extend it by a year or not, or by 2 years, taking into account the GST Council. Yes, so, I'll come to an answer. I'll conclude shortly. There are some exemptions which have been come on the International Financial Services Center. The income of non-resident from offshore derivative instruments, income from over-the-counter derivatives. Frankly speaking, sir, the IFC, International Financial Services Center, seems to be like a white elephant. This government is trying to revive it, trying to push various things in order to make it alive. It's like giving those electric shocks to a patient that is already on its last breath and a patient that is already on the last leg. You have done since 2014 come out with so many initiatives to push the IFC. But what has happened? Nothing. So why didn't you take the right lesson from it, and instead of pushing more initiatives, understand that there could be other locations in India that are much more suitable for International Financial Services Center. I am not asking you to shut it down, but I am asking you to think broadly and have an open mind. Think about the West, think about south of India, think about the East, whether it's Calcutta, Bombay, Bangalore, or if you even want to have it in the Northeast, which has such a long international boundary. Be more broad in your outlook. So again, I don't want to always criticize this government. We must put on record things that they have done well and we appreciate. I've already talked about how COVID-related payments have been exempt. Yes. Again, they have come up with the insurance scheme payments for persons with disability. We welcome that. And, sir, there are 2 things I want specific, if the minister could give us the details. So, on GST, sir, time has also come to evaluate the GST. And does the government have data that pre-GST, what was the volume of income they were collecting as part of indirect taxes? And compare that with the post-GST era, what is the volume of revenue collected from indirect taxes? Is it same? Has it decreased? Or has it increased? That they should talk about. Secondly, sir, corporate tax was reduced from 30% to 25%. No doubt it had a hit on our revenue, but the government's argument was that this will lead to more corporates investing,
which will therefore lead to more jobs. Has this government done any study that while the middle class of India, who continuously votes and supports this government, have got no relief, corporates have got a relief of 5%, and on the basis that they would invest more, they would put in more factories, they would employ more? Has that argument worked out? Do they have any study showing that more investment and more jobs have been created? Yes, Gogoji, please. So with that, sir, I don't want to take too much of your time. I've talked about direct tax, I've talked about indirect tax, corporate, GST, SEZ, the customs. So there are certain suggestions which have also come from chartered accounting, various agencies. I hope they will take into account. But at the same time, sir, let me go back to where I started from. Sir, fiscally, we are not in a good position. Our states are in debt. Our nation is in debt. Borrowings have increased. Most of the payments are going into borrowings. And this government is, through its policies, are pushing us further into debt. This is not a good sign. Already there are a lot of other vulnerabilities that I talked about, like crypto, like the new investors and less informed investors in the stock market. The debt and the fiscal position of our states is very important. States, I'm sorry to say, have no other option, but they're playing with excise-based income. They're either extending the wine liquor shops, the timings of wine liquor shops and opening from the beginning, or they are trying to increase their taxes. Because states, all the power of the states, the sovereign power of states to raise revenue has gone into the GST. So fiscally, sir, we are in a very bad position. Our hands are constrained. Time has come, sir, that this government, instead of using external factors to justify its moderate, conservative stance, uses the same risk to come up with a progressive and strong policy. That is what the UPA government has done on various occasions. When the 2008 global financial crisis hit, our growth did not take a hit like other countries did, and our employment was not as bad as it is now. Similarly, in 1991, come the moment of crisis, the government under our Finance Minister Dr. Manmohan Singh, Prime Minister P.V. Narasimha Rao, and all the others came together to give a new outlook, an economic outlook, a new economic vision for our country, which has given us a new middle class and the economic muscle to call ourselves as an power, as an Asian power. Therefore, I request this government to emulate the UPA and use this moment of difficulty and crisis to have a bold vision and stop being cautious. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Next, Nishikant Dubey. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का, मंत्री भगवत कराड़ साहब का अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड के इस क्राइसिस में भी उन्होंने जिस तरह से गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, मजदूर, महिला, बच्चे, दिव्यांग, जो हमारे मित्र गौरव गोगोई साहब बता रहे थे, उसकी चिंता की है, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि पिछले 2 साल से जो देश दुनिया के हालात हैं, कोविड के कारण कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है दुनिया की, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी हो, चाहे यूके की इकोनॉमी हो, चाहे यूरोप की इकोनॉमी हो, या हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और सिंगापुर जैसे कंट्री की इकोनॉमी हो, सभी परेशानी के हालत। और चूंकि ये प्रजातांत्रिक देश है, इस देश में एक बड़ी कठिन परिस्थिति है सभापति महोदय, कि एक तरफ आपको इस कोविड के क्राइसिस में लोगों तक कैसे खाना पहुंचाएं, एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोगों के रोजगार कम हो रहे थे, स्वाभाविक तौर पर कम हो रहे थे, लोगों को पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम हो रही थी, और दूसरी तरफ जो मध्यम वर्ग है वो इन चीजों से परेशान हो रहा था। और आज जिस तरह से ये यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, उसमें जो समस्याएं डेवलप हुई हैं, जिस तरह से पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, उसमें से कैसे उनको राहत पहुंचाया जाए, कैसे उद्योग धंधा लगाया जाए, कैसे उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान किया जाए,
तो ये एक कॉम्प्लिकेशन का एक इतना बड़ा जगह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि खाने के लिए भी नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर परिवार इज्जत बचाना है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार सृजन करते हैं। इन तीनों के बीच जिस तरह से बैलेंस बनाकर ये फाइनेंस बिल लेकर आए हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। सर, एक हमारे यहां कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस के मित्र और अपोजिशन के जितने लोग हैं और जितने लोग बोलने वाले हैं सर, मैं उसको एंटीसिपेट कर रहा हूं कि वो पेट्रोल के प्राइस के बारे में निश्चित तौर पर बोलेंगे, महंगाई के बारे में बोलेंगे, पेट्रोल के प्राइस के बारे में बोलेंगे, और फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या हमारी सरकार को कि आप 7 साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप 7 साल से हैं, क्या करेंगे? लेकिन हम क्या करें सर, क्या करें? आपने जो चीज छोड़ा है उसके बारे में हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप कर्जा छोड़कर गए हो, कर्जा बढ़ा के यदि दर्जा बढ़ाते हो तो हम क्या करें? हम पेपर लेकर आए सर। आज ये पेपर है सर जो उत्तर सभा पटल पर माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने रखा था। 2004 में अटल जी की सरकार गई, 2004 से इन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक एक बड़ी अच्छी सरकार चलाई सर, और केवल इकोनॉमिस्ट थे उसमें सर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सरकार चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट सरकार चलाते हैं। हमारे तरफ होता है कि हमारे यहां टैलेंट पूल कम है, टैलेंट क्रंच है। सारे टैलेंटेड लोग यूपीए में ही थे सर, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट, रंगराजन साहब थे सर, कौशिक साहब थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, रघुराम राजन साहब थे। आप दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट का नाम लीजिए, क्लिंटन के गुरु, ट्रंप के गुरु, सभी गुरु जो है भारत में ही थे सर। और उन्होंने जब ये पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ सर, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, फिर हमको आना नहीं है। तो जो आने वाले लोग हैं उनको हम ऐसी परिस्थिति में धकेल कर जाएं जहां से कि उनकी वापसी का कोई रास्ता जो है नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। उनको क्या पता था कि एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जाएगा जिसके ऊपर की पूरी देश की जनता को, 130 करोड़ जनता को विश्वास है, जिसकी बात पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीती। और उन्होंने सर लगभग 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया सर, और जिसका इंटरेस्ट रेट था 6.35 से लेके 8.4% तक सर। आज यदि गरीब लोग बैंक में पैसा जमा करने जाएं तो उनको 4%, 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो एम्प्लॉई हैं ईएफओ के, जो कि आप खुद ही मजदूर के नेता हैं सर, यदि आप देखेंगे तो सरकार को 8.5% से उसको डाउन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपने बिना किसी सोच के, सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे यूपीए के लोगों ने ये 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया सर। और आप समझें कि इस परिस्थिति में जब यह लौटाने की बात है, जब 2014 से है, क्योंकि कमिटमेंट है सर, भारत सरकार का कमिटमेंट है, देना है, 3 सॉवरेन गारंटी, 3,22,000 करोड़, 1,44,000 करोड़ रुपया हमने लिया और 3,22,000 करोड़ रुपया हमको लौटाना है सर। लगातार चर्चा होगी, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, होते रहता है सर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी इधर से चिल्लाते थे कि टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। जो बिजनेसमैन उस समय आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर मैंने सारे डिबेट डिस्कशन 1952 से सुने हैं सर, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो ऑयल बॉन्ड है सर, ये ऑयल बॉन्ड जो आप 1,44,000 करोड़ का 3,22,000 करोड़ रुपया दीजिएगा, ये किसको दीजिएगा? कभी आपने देखा है? सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनकी भी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है सर,
उन सबों ने इसमें ऑयल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अडानी और अंबानी की सरकार कांग्रेस है सर कि भारतीय जनता पार्टी? मेरा एक सीधा सीधा सवाल है सर। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद आज लगभग वर्ल्ड मार्केट में 130 से 139 डॉलर पर बैरल जो है क्रूड के ऑयल हो गए, दाम हो गए सर। क्या करें? हम भी आप ही की तरह नाटक करें? हम भी आने वाले जो जनरेशन है उनको जो है रोड पर भीख मांगने के लिए पैदा कर दें? हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को ये बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे। वोट की राजनीति अलग है, देश की राजनीति अलग है। आज जो बातें कह रहे थे, 15 साल तक गौरव गोगोई साहब के पिताजी वहां मुख्यमंत्री रहे असम में, क्यों ऐसा हालत है? आप फ्री का जो है यदि किसी को बांटना शुरू करोगे, फ्री की बिजली दे देते हैं, फ्री का आपको मकान दे देते हैं, फ्री आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, पैसा प्रत्येक महीने दे देते हैं, क्या ये फ्री बी की सरकार आप चलाने की बात कर रहे हैं? और इसमें से इसके बाद आपको लगेगा कि केंद्र उसकी मदद करे? ये हालत थे सर। आपको हमारे देश की ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप ऑयल ब्लेंडिंग की बात करें, आज 20% इथेनॉल यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रधानमंत्री जी देने की बात करते हैं, यूपीए चाहता था 5% के लिए। हम जब आए तो 10% देने की बात किए और आज यदि हम 20% देने की बात कर रहे हैं तो हम ऑयल इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। यदि आज उस दिन नितिन गडकरी साहब यदि बोल रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ईवी 4 या हाइड्रोजन के से चलने वाले जो है व्हीकल को यदि बढ़ावा देंगे और जो होने वाला है 5 साल 10 साल में, तो वही हालत होने वाला है जो 77 तक इस देश में। मैं आपको बताऊं कि यशवंतराव चौहान साहब बहुत बड़े नेता थे। यहां बैठी हुई सुप्रिया जी, यशवंतराव चौहान सेंटर जो है उनका पार्टी का ऑफिस है। वो लगातार जब वित्त मंत्री के तौर पर यहां भाषण देते थे तो एक ही भाषण देते थे कि मैं एक ऐसा वित्त मंत्री हूं जिसको कि यहां के लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज की आवश्यकता है, अनाज मुझे इंपोर्ट करना है। और आज सिचुएशन यह है कि उस दिन पीयूष गोयल साहब बोल रहे थे हमारी सरकार ने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। जो इंपोर्ट कर रहा था, जो देश इंपोर्ट कर रहा था, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही मैं कह रहा हूं, 50 बिलियन एक्सपोर्ट पहुंचा। मैं नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन 50 बिलियन एक्सपोर्ट हो गया। आज जो हमारी निर्भरता थी अनाज के ऊपर, जो कि बजट का एक पार्ट होता था, आज वो निर्भरता खत्म हो गई और आज हम दुनिया को खिला रहे हैं। उसी तरह से यदि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता खत्म कर लेंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी रेल जो है वो सारी इलेक्ट्रिफिकेशन पर जा रही है, सारी इलेक्ट्रिक पर चलेगी सर। यदि ये सिचुएशन पैदा हो जाएगा तो कभी भी ये सवाल पैदा नहीं होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो गौरव जी? आपकी सरकार में पूरा रिपोर्ट लेके आया हूं कि जो अपोजिशन की सरकार है, वैट और एक्साइज की आप बहुत बात करते हो, जनता की बात करते हो, जीएसटी में क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आते हो? हम तो कहते हैं, भारत सरकार तो लगातार कह रही है कि आप ले आओ जिससे कि पैरिटी हो। गरीबों को जो है आपकी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, हमारी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन आप गरीबों के लिए चिंतित नहीं हो, किसानों के लिए चिंतित नहीं हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैं केरल में वैट 30% है, आपके राज्य में सभापति महोदय। कर्नाटक में 30% था, जिसको कि घटा के हमारी सरकार ने 18% किया है। आंध्र प्रदेश अपोजिशन का है सर 36%। महाराष्ट्र जहां पैदा होता है सर, तेल पैदा होता है, बड़ा अच्छा फंक्शन करती है हमेशा, 40%, 39.12%, 40%। सबसे ज्यादा यदि पेट्रोल और डीजल का कहीं दाम है तो महाराष्ट्र में है। राजस्थान आपकी सरकार है 31%, और दिल्ली जहां हम हैं 27%। और फिर आप कहोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मेरा यह कहना है सर कि आज पूरे देश के सामने ये जो नोशन है कि हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, ये खत्म हो जाना चाहिए सर। दूसरा सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। ऑयल बॉन्ड में अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट केवल दिया है।
40,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट दिया है और सब अंबानी अडानी को ही दिया है। क्या करें, देंगे आप एक दिन निकालिएगा, आरटीआई से कहिएगा हमने अंबानी को दे दिया, अडानी को। आप थोड़े कहेंगे कि आपने इस देश को बर्बाद किया था, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा सर, दूसरा जो इस बजट में दूसरा जो बड़ा अच्छा सवाल है, संजोग से मिस्टर उदासी यहां मौजूद हैं सर, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हमने बहुत संशोधन किया है सर। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपको मैं बताऊं कि 2014 में सीएजी की रिपोर्ट आई, C&AG की रिपोर्ट आई, और एक अच्छी बात कहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, एक दिन कल ही मैं अपने बेटे के साथ बात कर रहा था चैरिटेबल ट्रस्ट पर, तो उसने कहा कि पापा मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने से ज्यादा बढ़िया है कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया जाए, या नहीं तो कहीं मंदिर मठ या कहीं मौलवी बन जाया जाए या कोई पंडित बन जाया जाए। ये जो करप्शन चल रहा है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते सर। 2014 में C&AG की रिपोर्ट आई और C&AG की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क किया कि चाहे वो अस्पताल चल रहा हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और ज्यादा के ज्यादा जो चीज चल रहे थे, क्योंकि बहुत प्राइड होता है कि हमारे पास मेडिकल की इतनी सीटें हैं, हमारे पास इंजीनियरिंग की इतनी सीटें हैं, हमारे पास मेडिकल बहुत फैसिलिटी है। और कराड़ साहब, आप जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है, बिजनेसमैन ऐसा कोई बड़ा नहीं है, कोई इतना पॉलिटिशियन बड़ा नहीं है जिसके पास की ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं। और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा कि सारे के सारे फ्लॉ है। इवन जो एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहता मैं सर, उन्होंने एजुकेशन के नाम पर बाहर जो है मेरे राज्य से जो कि आगे बढ़ा, मेरे राज्य के कारण आज मुंबई को पैसा दे रहा है, उस राज्य ने मेरे यहां एक भी इंस्टीट्यूट नहीं बनाया सर, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, एक भी अस्पताल बढ़िया नहीं बनाया। लेकिन उसने हार्वर्ड में, उसने ऑक्सफोर्ड में, उसने ब्राउन में लगभग इस देश का 3,000 करोड़ रुपया दे दिया सर, बिना आरबीआई के परमिशन के, बिना रेवेन्यू के परमिशन के 3,000 करोड़ रुपया दे दिया पूरे टाटा ट्रस्ट ने सर। और क्यों उसके ऊपर इन लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक उस टाटा ट्रस्ट ने कितने पॉलिटिशियन हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन, कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देकर पढ़ाया, कितने ऐसे पत्रकार हैं जिनके बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देके पढ़ाया, और बिना आरबीआई के परमिशन के, सीएजी के रिपोर्ट के आने के बावजूद भी सर इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को उगने दिया। आज बच्चों की पढ़ाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। या आप स्टेट की बात करते हो, स्टेट कंसेशनल रेट पर उनको जमीन देता है, स्टेट हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह देता है, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जहां रुका हुआ था सर, कि हम और उदासी जिस कमेटी के मेंबर थे, हमने कहा कि नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होना है, और पीएससी की एक प्रॉपर अच्छी रिपोर्ट बनाई सर कि यदि किसी को कंट्रोल करना है, यदि इसमें कुकुरमुत्ते की तरह उग आए एनजीओ को यदि कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट पर। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में यदि किसी लूप होल्स को उन्होंने रोका है तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लूप होल्स को रोका है सर। उन्होंने सारे अमेंडमेंट किए। इसके बाद मैं आपको बताऊं चेयरमैन सर, ब्लैक मनी की बहुत बात आती है, बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है सर। 2011 में मेरा सीट वो 543 था, 545 सर, सबसे अंतिम सीट था। 545 ही इस लोकसभा की स्ट्रेंथ है, मेरा नंबर 545 था सर। हम लोग एक ही मोहल्ले में, अर्जुन मेघवाल जी, हम लोग सब साथ ही बैठते थे, उदासी साहब। तो मैंने वहां से भाषण देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के 3 ऐसे सांसद हैं जिनका की अकाउंट लिंचेनस्टाइन बैंक का अकाउंट आया था, लिंचेनस्टाइन का अकाउंट आया था, और मैंने जो है इस फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको डिस्क्लोज किया था। उस वक्त माननीय यहां के वित्त मंत्री जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसमें
एक मंत्री थी सर, मतलब कांग्रेस की एक मंत्री भी थी। मेरे भाषण पर एक पीआईएल हुआ सर, हर्ष रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किया और उस पीआईएल को शांति भूषण जी और राम जेठमलानी जी ने उस केस को लड़ा। राम जेठमलानी जी का अब नहीं है और शांति भूषण जी का इतना ही योगदान था कि मेरे भाषण पर जो पीआईएल हुआ उस पीआईएल का केस उन्होंने लड़ा, क्योंकि जब लोकसभा में कोई जवाब नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सर, 2012 में कहा कि एसआईटी बनाओ, ब्लैक मनी की एसआईटी बनाओ। 2012 से लेके 2014 तक सर, ये यूपीए की सरकार, क्योंकि इसको भ्रष्टाचारियों को बचाना है। आज जो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति है सर, उसके पीछे रीजन यही है, देश के लिए कोई काम नहीं करना है। 2 साल तक ये बैठी रही और जब माननीय मोदी जी ने 27 मई को शपथ लिया तो सबसे पहले कैबिनेट में उस एसआईटी को बनाया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और आज मैं आपको बताऊं कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 68 में एक बड़ा संशोधन लेकर यह सरकार आई है। क्यों लेकर आई है सर? हसन अली का मामला हो, काशीनाथ टपोरिया का मामला, लाखों लाख करोड़ सर केवल कैश ट्रांजैक्शन हवाला के माध्यम से जाते रहे, कोई माए बाप नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हसन अली का पैसा चला गया सर, काशीनाथ टपोरिया का मामला चला गया। आज भी हवाला के माध्यम से कितने पैसे गए उसके बारे में कंप्लीट जो है हिसाब किताब नहीं नजर आ रहा है। भारत सरकार ने यह काम किया। आपको पता है सर कि पिछले बजट में जब लगातार हम पिछले 7-8 साल से जो काम कर रहे हैं उसमें हमने कह दिया कि 2 लाख से ज्यादा जो है आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कितना बड़ा आंदोलन हुआ सर, सारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है रोड पर आ गई। सबों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को नाराज करती है। हमारे भी कई एक सांसद सर माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार ये आग्रह करते रहे कि ये तो हमारा बनिया वर्ग जो है, हमारा वोटर है, ये नाराज हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिसको नाराज होना है हो जाए, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम इस देश की राजनीति करते हैं, हमको साफ सुथरी राजनीति करनी है। और आज जो है ये हम सक्सेसफुल हुए हैं। और इसमें सेक्शन 68 में हम ये संशोधन लेकर आए हैं कि यदि आप किसी को कैश ट्रांजैक्शन दीजिएगा, किसी कंपनी में इक्विटी लीजिएगा, तो आपको अब बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से लेकर आए। क्या हम ब्लैक मनी के ऊपर काम नहीं कर रहे? स्विस बैंक से कितने पैसे लाए? स्विस बैंक का मैं चाहता था सर कि रेवंत रेड्डी बोले, क्योंकि मुझे पता है कि अधिजल गगरी छलकत जाए। खाता में 15 लाख डालने के लिए कहा था, वो भूल गए। मैं स्पीकर महोदय चाहता था आज तक कि कबीर का एक दोहा है सर कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा 5,000 करोड़ अपना तल शीतल करे आप हो निर्मल हो। मुझे लगता था कि मैं आराम आराम से अच्छी अच्छी बातें करूंगा सर। इसी पार्लियामेंट में मैंने बोला कि ब्लैक मनी में बड़ी समस्या है। क्या है उसका पीछे रीजन? ये जो बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से कितना पैसा आया सर, हमारी सरकार आने के बाद, क्योंकि इनको तय हो गया था 2012-13 तक इनको पता चल गया था कि अब किसी कीमत पर यह सरकार वापस नहीं आनी। तो इन्होंने क्या किया कि स्विट्जरलैंड के साथ जो है डीटीए शामिल, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो डीटीए होता है सर, वो स्विट्जरलैंड के साथ कर लिया और उसमें कहा कि आपको डिस्क्लोज करेगा। जैसे हमने फटका साइन किया अमेरिका के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने सर, वो ये कहा कि 2016 से 2012 में एग्रीमेंट, राजकुमार बाबू आप तो गृह सचिव रहे हैं, कि 2012 में एग्रीमेंट साइन किया कि जब 2016 आएगा 2016, जब इनको पता था कि जब ये सरकार में नहीं होंगे, तब आप हमको बताना कि हमारे किस आदमी का अकाउंट है। आप ये बताइए सर कि 4 साल जो पैसा आपके देश का चोरी करके ले गया है, वो इंतजार करेगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। जितने लोग थे सर 4 साल में वो सब पैसा लेके चले गए। सबों ने अपने अकाउंट को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिया सर। ट्रस्ट में यहां के जो बिजनेसमैन है, जो पैसा लेके गए, जो यहां के भारत सरकार का पैसा, बैंक का पैसा लूट कर गए सर, उन्होंने ट्रस्ट बना लिया। वो ट्रस्टी वहां का लोकल नागरिक है। और यदि मैं भारत के लोगों का नाम लेने के लिए जाऊंगा तो वो वहां के लोकल लोगों का नहीं पैसा बताएगा। और जितने पैसे हैं सब उन लोगों ने ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिए। और इसके बाद ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से कहां से पैसा आया? करो आप, भरे हम। ये हालत है सर। इसके बाद मैं
ऐसा है सर कि तीसरा जो पॉइंट है सर, जो कांग्रेस ने कहा, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी हमारे दिल से, और जिन्होंने उठाया इस मुद्दे को सबसे पहले शिव कुमार उदासी साहब स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग 2012-13 से आज क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है सर, आज डिजिटल करेंसी की बात होती है। इन लोगों का कैसा विजनलेस आदमी थे, मैं यही बता रहा हूं कि 2012-13 से लगातार हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते रहे और कोई भी ऐसा गवर्नर हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, चाहे वो सुब्बा राव साहब हों, चाहे रघुराम राजन साहब हों, चाहे उर्जित पटेल साहब हों, या आज के वर्तमान जो गवर्नर हैं, उस वक्त सेक्रेटरी भी थे और आज गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। कोई भी ऐसे आदमी नहीं रहे जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है डार्क नेट पर चलता है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है केवल ड्रग्स के पैसे के हवाला का एक दूसरा रूप आने वाला है और इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की, कि हमने उस रिपोर्ट में जो है इस चीज का मेंशन किया कि देश का आने वाला, दुनिया का जो आने वाला खतरा है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। 2013 से लेकर 2014 तक 1.5 साल जो है यूपीए की सरकार रही सर, इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सिचुएशन है वो बिल की बात करते हैं। अब बिल कब आएगा, नहीं आएगा, लीगल है, इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है सर। लेकिन जो सिचुएशन पैदा हुआ पूरी दुनिया में जो सिचुएशन पैदा हुआ कि आज जो है, यदि आपको करप्शन करना है, किसी को यदि पैसा देना है घूस का, तो वो क्रिप्टो में जा रहा है। किसी को ड्रग्स खरीदना है वो क्रिप्टो में जा रहा है और पूरी दुनिया इससे परेशान है। और पूरी दुनिया इसीलिए परेशान है कि जो करेंसी है हमारी, उस करेंसी में हमको पता है कि कितना करेंसी छपा, इस देश में कितनी करेंसी है, उस करेंसी का कितना उपयोग होगा, कितना उसका इंपोर्ट बिल है, कितना उसका एक्सपोर्ट बिल है, और इसको सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इस क्रिप्टो का कौन मालिक है, ये आज तक यही पता नहीं चला सर। अलग अलग एक्सचेंज बन गए हैं, अलग अलग चीजें बन गई हैं, और भारत सरकार और पूरी की पूरी जो चाहे आरबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सभी इसके लिए चिंतित है कि ये इस तरह के पैसे जो है कैसे आ गए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहला भारत सरकार को यह था कि आज के लोगों को, आज के जो बच्चे हैं सर, हमारे पॉकेट में यदि कैश 10-20 हजार नहीं हो तो मैं तो अपने गाड़ी में नहीं बैठता सर, मैं तो पैदल टहलने भी नहीं जाता। लेकिन मेरे बेटे के पास यदि 5,000 भी रुपया होगा, आज का जो जमाना बदला है, उसको लगता है कि एक बोझ हो गया। लोग जो है कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार ने इस बजट में जो सबसे बढ़िया काम किया कि वो आरबीआई को जो है डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ाया। क्रिप्टो का जहां तक सवाल है सर, कि क्रिप्टो में जो लूप होल्स था, वो 30% जो उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है, उसमें चाहे घाटा हो चाहे नफा हो, या 1% टीडीएस लगाने की जो बात की है, एक बहुत बड़ा कदम है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। और आज के ही अखबार में यदि आप स्पीकर महोदय देखेंगे, सभापति महोदय देखेंगे, तो आज ही के अखबार में फ्रंट पेज पर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि पूरी की पूरी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो हिली हुई है भारत सरकार से, कि जिस तरह से इसके तरफ इस दिशा में जा रही है, वो एक तरह से समझिए कि क्रिप्टो को आज नहीं कल बैन होना ही होना है। और भविष्य की करेंसी जो है, जो दुनिया की करेंसी जी डिजिटल करेंसी होगी, तो भारत सरकार अपने विजन के साथ उसी तरफ से बढ़ रही है। इसीलिए डिजिटल करेंसी के बारे में भी मुझे लगता है कि अपने को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वो रास्ता ठीक ही होने वाला है। इसके अलावा जो एक बड़ी राहत दी है सर, इस सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, जिनके पास सीए नहीं है, या जो मान लीजिए कि किसी कारणवश उनका अकाउंटिंग छूट जाता है, तो उसको एक बहुत अच्छी राहत भारत सरकार ने दी है कि अब 2 साल के बाद भी आप अपने इनकम टैक्स को रिवाइव कर सकते हैं, मतलब आप फिर से उसको ठीक कर सकते हैं। और ठीक करने में आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। यदि आप सच नहीं बताएंगे तो समस्याएं आएंगी, और उस समस्या को निजात पाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा ये काम किया है सर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पार्लियामेंट को समझने का सवाल है, हम हमेशा इस पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं
कि गरीबों के लिए अलग कानून है, अमीरों के लिए अलग कानून है। यह फैक्ट है कि हम जिस वोट से जीत कर आते हैं वो गरीबों के वोट से जीत कर आते हैं। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास लॉबिस्ट हैं, वो अपना कॉर्पोरेट अफेयर्स का मंत्रालय चलाते हैं और उनके लिए लॉबिस्ट तैयार होते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट कानून पास करती है, और यह सोचनीय विषय है क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि आईबीसी एक्ट अभी तुरंत बना 2 साल में, आपने उसमें जो है 50 संशोधन कर दिए। कॉर्पोरेट बिल हमने बनाया था, कॉर्पोरेट एक्ट आप ही की यूपीए सरकार लेकर आई थी, 2013 में बना, उसमें भी कम से कम नहीं भी कुछ तो 20 बार 25 बार संशोधन करना पड़ा। कभी इसके तह पर अभी मैंने देखा कि इनकम टैक्स एक्ट में और कस्टम एक्साइज एक्ट में कई एक चेंजेस किए गए, और मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसका कारण है, जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा सर, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है कि एक कंपनी है, वो कंपनी अपना टैक्स बचाने के लिए या किसी कारण से वो सब्सिडियरी कंपनी लगाती है और उससे जो है वो पैसा लेकर आती है, और उसका जब टैक्स कम्यूट करने की बात आती है तो कोई डिसीजन कुछ होगा, कोई डिसीजन होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग में इतनी बड़ा लिटिगेशन और समस्या होने लगा सर, मैं बस 4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। इतनी बड़ी समस्या होने लगी कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट किसी कंपनी के लिए अलग, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी कंपनी के लिए अलग, मुंबई हाईकोर्ट का किसी कंपनी के लिए अलग। मैं 10 केस लेकर आया हूं सर, और इतनी बड़ी समस्या होने लगी कि जो अथॉरिटी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है, वो समस्या में पड़ने लगी कि फाइनली हम किसकी बात माने। और इस कारण से एक बहुत बड़ा संशोधन ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे और भी 5-7 ऐसी चीजें हैं जिसमें लेकर आए सर। दूसरा जो इस सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया सर, कि मान लीजिए कि किसी कोर्ट ने किसी मुद्दे को यदि सेटल कर दिया और उसी तरह का कोई केस यदि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चल रहा है, तो जो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है उसके आधार पर इस लिटिगेशन को खत्म करना है। क्योंकि आपको पता है कि हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं, फैसलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा काम ये भारत सरकार ने इसके ऊपर किया है सर। उसी तरह से इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कही हमारे बहुत ही काबिल मित्र गौरव गोगोई साहब। अब क्या है कि कल मंत्री जी ने बताया कि 1995 में, मैं आपको बता रहा हूं कि विजन, नेतृत्व क्या होता है और उस नेतृत्व के क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। एक 1995 में आपने WTO एग्रीमेंट साइन कर लिया, और 96 में जब चिदम्बरम साहब, इनके बहुत काबिल, मैं वित्त मंत्री के तौर पर उनका नाम भूल गया, वो और भी काबिल है सर, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनका आर्टिकल प्रत्येक सप्ताह पढ़ते रहता हूं, अपने आप को खुश पाता हूं उस आर्टिकल को पढ़ के कि वो किस तरीके से जो है पूरे देश को धकेले। यहीं PMLA का कानून जब लेकर आए तो मैंने उसी 545 में उठकर कहा था सर कि ये PMLA का कानून आप ऐसा लेकर आए हो कि वाइफ और हस्बैंड की यदि लड़ाई होगी ना तो उसमें भी जेल हो जाएगा। और पता नहीं मेरे मुंह में क्या सरस्वती उस दिन था कि किसी दिन यदि आप उस चक्कर में पड़ गए तो शायद आपके ऊपर भी ये कानून लग जाएगा। और इतिहास गवाह है सर कि उसी PMLA कानून में जो है वो और उनके परिवार के लोगों को जेल जाना पड़ा। इसलिए कानून ऐसा बनाना चाहिए जो सर्वग्राही हो। तो इलेक्ट्रॉनिक का क्या है सर कि 96 में उस नेतृत्व को पता ही नहीं था, 96 में उस नेतृत्व को पता ही नहीं था कि इस देश में मोबाइल, कंप्यूटर, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसका इतना बड़ा मार्केट होने वाला है। और उन्होंने एक प्राइसिंग जो है फाइनल तय कर दी सर। उस प्राइसिंग के आधार पर आज जो है, मैंने आपको कहा कि इस देश में महिलाएं जो है सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड के ऊपर चिंता करती हैं, वो खरीदने का कोशिश करती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है सर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमारे यहां इंपोर्ट होकर आते हैं। और ऐसा एग्रीमेंट साइन कर दिया, क्योंकि भारत सरकार एग्रीमेंट साइन करती है, उसके आधार पर चाहकर भी प्रधानमंत्री जी हमारे इंपोर्ट को जो है घटा नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो सारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप यही मैन्युफैक्चर करो, हम आपको सुविधा देंगे। जैसे PLI स्कीम लेकर यदि आए हैं, हम आपको सुविधा देंगे। तो इस तरह का काम जो है भारत सरकार कर रही है। और इस बजट में भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल हो, चाहे जेम्स का सवाल हो, चाहे ज्वेलरी का सवाल हो, हमने ये किया है। अंत में सर GST के ऊपर इन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, सारे स्टेट की पावर आपने ले ली, ये कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है।
तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? हम जीएसटी थोड़े लाना चाहते थे। हम तो 2010-11 में आप ही का पॉलिसी था, आप ही की पॉलिसी थी जीएसटी 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 बिल आपने इंट्रोड्यूस किया। बस 2-3 मिनट सर। जीएसटी बिल आपने इंट्रोड्यूस किया, उसमें कई एक फ्लॉ थे। आपने कमेटी बनाई, केलकर की कमेटी बनाई, मैं ये कह रहा हूं मोंटेक सिंह अहलूवालिया की कमेटी बनाई, और उसमें से आपने स्टेट के सारे पावर ले लिए। आपने ले लिए तो हमको तो ये देश चलाना है ना, हमको आगे बढ़ाना है। कोई कानून यदि आपने एक बार बनवा दिया या बनाना चाहते हैं तो हम उसको वापस थोड़े ले लेंगे। इनकम टैक्स एक्ट यदि 1961 में आ गया तो उसको हम वापस थोड़े ले लेंगे। इस बजट में सर जीएसटी में हमने संशोधन करके ये काम किया है कि कई एक लोग इनपुट क्रेडिट लेने के लिए और आउटपुट क्रेडिट लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, कि अलग अलग कंपनियां बना लेते हैं और उस कंपनियों को 3 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद जो है वो वेनिसिंग कंपनी हो जाती है, वो कंपनी बंद हो जाती है सर। और आज फिर आप धसना टंगाते रहिए, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इस कारण से हमने इस जीएसटी के लूपहोल्स को रोकने की कोशिश की है। और आज जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है सर वो 1,30,000 करोड़ से ज्यादा है, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम नहीं समझते थे। इसलिए जीएसटी के बारे में भी एक बड़ा संशोधन लेकर हमारी सरकार आई है। मैं केवल अंत में यही बोलूंगा सर कि एक कहा जाता है कि सनय पंथा सनय कंथा सनय पर्वता लांघम, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव गरीब किसान के साथ साथ उद्योग की चिंता की, रोजगार की चिंता की, इस देश को आगे बढ़ाने की चिंता की, और ये देश कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी उसके लिए एक रास्ता बताया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। You have replied everything. Then now roll to finance. Nishikant ji, you have replied all the queries. Say K. Sundaram ji. Honorable Speaker, sir. Finance Minister. I rise to oppose the Finance Bill 2022. At the outset, I express my sincere thanks and gratitude to our party leader, the ever-dynamic Chief Minister of Tamil Nadu, Sri M.K. Stalin, for giving me this opportunity to put forth the representation of the people of Tamil Nadu in this August House. Honorable Speaker, sir, a state of widespread chaos already exists amongst the taxpayers of this nation due to the confusing dual tax calculation regime. The Finance Minister has conveniently ignored the aspirations and problems faced by the taxpayer. Ever since the fateful night of November 8, 2016, demonetization, the people of India have been continually suffering. This was aggravated by the hasty introduction of GST, and the pandemic has massively deteriorated the financial situation of the people of India. Except for the salaried class, the farmers and poor have been hard hit due to the trifecta of mistakes. There have been new tax reforms this year, which has been a long-standing demand of the taxpayers. How do we expect the people to spend while they have no income? The Finance Bill 2022 has failed to live up to the expectation of the taxpayers. Honourable Speaker, sir, I come from the region that is often referred to as the Manchester of South India. The textile industry of Tirupur and Coimbatore are well renowned across the world for the quality and craftsmanship of the textiles. The textile industry is now facing an existential threat due to the trifecta of mistakes by this government. The government has not taken any concrete steps to address the concerns of the industry. The withdrawal of basic custom duty concessions and exemptions on the spindles, yarn guides, balloon control rings and travelers, technical textiles, woolen machinery items, non-woven textiles, denim textiles, shutterless looms, continuous polymerization plant, synthetic fiber plant, synthetic filament yarn plant, viscose stable fiber plant, lyocell fiber plant, yarn dyeing machines, knitting machines, and part of their manufacture, machines for extruding, drawing, texturing, spinning, twisting,
winding, weaving, knitting, auxiliary machines will have a negative impact on the lack of people associated with the textile industry. Instead of a mere token reduction of custom duty, I call upon the government to exempt cotton, cotton fibers, synthetic fibers and textile materials from custom duty for the next 5 years to boost the industry. The withdrawal of basic custom duty, concession on specific agriculture implements and parts used for their manufacturer, including paddy transplanter, sugarcane harvester, cotton picker, will affect the farmers who are still waiting for the long-standing promise of doubling the farmers' income by 2022. Honourable Speaker, sir, Pollachi region is well known for its tender coconuts and coconut byproducts. A 20% export duty on coir byproducts like floor coverings will adversely affect the coir industry. Hence, it should be withdrawn immediately and the government should take steps to promote the coir industry. The imposition of 100% duty on edible oils will have a domino effect on the price of their essentials. The oil mills of Pollachi constituency are already suffering due to 18% GST on coconut oil, containers with less than 1 liter quantity, and 5% GST on more than 1 liter quantity. I call upon the government to remove this GST to boost the livelihood of coconut farmers. The price of edible oils have already increased up to 45% in recent days due to Russia-Ukraine crisis. This hasty decision of imposing 100% custom duty on edible oils will affect the common man. The imposition of additional 2 rupees excise duty on petrol and diesel will also lead to inflation along with the increase in price of edible oils. The government should also grant exemption to the defence and semiconductor sector so as to boost the planned indigenous semiconductor sector and the planned defence corridors. The sum of Honourable Speaker, this bill has ignored not only the taxpayers but also the common man. The Government of India should heed the advice of the great Tamil poet Thiruvalluvar, who in his magnum opus Tirukkural says, Aran eenum inbamum eenum tiranarindhu teedindri vanda porul. Aran eenum inbamum eenum tiranarindhu teedindri vanda porul. Meaning, only the wealth acquired with the knowledge of the proper means and without foul practices will lead virtue and happiness. The government should keep it in mind the aspirations of the citizen and should take the policy decisions accordingly. With this, I conclude. Thank you, sir. Honourable, where is the list? Yes. Yeah, please. Thank you, sir. सर निशिकांत दुबे जी उनका स्पीच स्टार्ट किया ये बता के जो उनको पता है ऑपोजिशन क्या कहेंगे, ऑपोजिशन को भी पता है वो क्या कहेंगे, बीजेपी सरकार कितने अच्छे हैं और कांग्रेस कितने खराब है. एनीवे, फाइनेंस बिल 2020-22, every year the central government introduces the finance bill along with the other documents of the union budget. The finance bill is brought to seek the legislator approval for giving effect to the various tax proposals, including direct and indirect taxes of the central government. This note discusses the key provision that the part of the finance bill 2022. Main tax proposal in the finance bill. Relation of the surcharges. The budget noted that there are several works contracts that require the formation of a consortium. The member is such consortium that usually companies, such of association of persons are object to the graded surcharge of up to 37% on their income. Note that the surcharge on domestic companies with income between 1 crore rupees and rupees 10 crores is 7%, while for those while income above rupees 10 crores in 12%. The budget proposal to cap the surcharge levied on the income of consortium or association of persons or
15% also. The long-term capital gains tax on instant equity shares is subject to the maximum surcharge of 15%. However, other long-term capital gains tax is subjected to the graded surcharge up to 37%. It has been proposed to cap the surcharge on long-term capital gains from transfer of any type of asset at 15%. Next, facilitate surcharge disinvestment of public sector company. According to Section 79, the Income Tax Act 1961, in case of change of shareholder of the companies is the previous year, any loss incurred period to the previous year cannot be set off against the income of the previous year. This is applicable for companies where the public does not have a substantial interest. The Finance Bill 2022 seeks to amend the Income Tax Act to provide that Section 79 will not apply to the public sector company. However, the holding company of the Artsville public sector company must continue to hold at least 51% of the voting power immediately after the strategic investment. Tax on virtual digital assets. Virtual digital assets have gained popularity and the volume of trading in such assets has substantially increased. In addition, a market is developing where payment for transformation with virtual digital asset can be made through another such assets. The finance will propose to tax any income from transfer or virtual digital asset at 30%. No deduction related to any expenditure or allowance for or set off any loss will be permitted while computing the income from transfer of such assets. Moreover, any loss from transfer or virtual digital asset will not be allowed to set off against income order. Any other provisions of the Act, Income Tax Act, such losses will also not be allowed to be carried forward to subsequent assessment years. The proposed amendment will come into effect from April 1st, 2023. Note that the central government has circulated certain amendments to the finance bill. Proposed amendment dropped the word "other" from any other provisions. Regarding setting of laws at state above. This may imply that the loss from virtual digital assets cannot be set against gains in such asset as well. Next, filling up of update returns. Taxpayer will be permitted to file any update return of income within 2 years of the assessment year. They will have to pay 25% penalty on tax and interest due if it is filed in the year after the assessment year and 50% penalty in the second year. Cooperative societies. The cooperative societies have to pay minimum tax at 18.5% rate. Note that the Taxation Laws Act 2019 reduced the minimum allotted tax rate payable by compensation at 15% to provide parity between cooperative societies and companies. It has been proposed to reduce the AMT rate at which cooperative societies pay income tax 15%. This amendment will be applicable from April 1, 2023. Change in customs duty. The finance bill also proposed to change the customs duty on the number of items. Example. Microbial fats and oil and their fractants. Current customs duty 30%, new custom duty 100%. Umbrellas 10%, new 20%. Imitation jewelry 20% current, new 20% and rupees 40 kg for 400 kgs, whichever is higher. Single or multiply loudspeaker 15%, now 20%. Headphones and earphones 15% to 20%.
Earphones, smart meters 15% to 25%. Solar sellers 20% to 25%. Solar modulars 20% to 40%. Non-tax tax proposal in the finance bill. Reserve Bank of India, the Reserve Bank of India Act 1934 is being amendment to enable RBI in issues its digital currency. मैं सिर्फ ये बोल के खत्म करना चाहती हूँ, क्या अमेंडमेंट होता है, क्या बिल आते हैं, क्या फाइनेंस बिल, देश के बहुत सारे गरीबों के कुछ नहीं पता, उनको पता करना भी नहीं है पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हो रहा है। सिर्फ उनका यही क्वेश्चन है, पेट्रोल, डीजल और जो हम लोग का गैस सिलेंडर वो कब कम होगा, कैसे कम होगा, सिर्फ कब का ही आंसर उनको चाहिए। ये डिस्कशन ये सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ इसका मतलब नहीं है, कुछ उनको लेना देना नहीं है। सर सिर्फ ये पूछना है मिनिस्टर से, जो भी दोष कांग्रेस को दो या बीजेपी कितना अच्छा करे उसमें हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग को भी यही क्वेश्चन है, कब ये कम होगा, कब कब कब। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री जयदेव गल्ला जी। Thank you, sir. Sir, we have reached the last leg of the process of the Union Budget 2022-23, and I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill. Sir, there's a perceptible change in the global economic scenario since the presentation of the budget due to the Russia-Ukraine armed conflict, and India cannot insulate itself from these developments, and hence we have to relook at the budget proposals, recalibrate our forecasts, and the House won't get a better opportunity than the Finance Bill to discuss these, sir. Sir, before I start making my submissions, I would like to compliment the Honourable Finance Minister and the Honourable Minister of Commerce and Industry and the government for showing outstanding performance and growth in our exports in this financial year. Sir, we have touched for the first time ever exports worth $400 billion in this financial year when compared with $292 billion in the previous year. So I take this opportunity to compliment the government for this achievement, sir. In view of the paucity of time, let me start with the issues related to my state, sir. Sir, my first point is regarding the capital city of Amaravati, which falls in my parliamentary constituency. Nobody can dispute that it is the prerogative of the Assembly to make laws, but at the same time, it is not just the Assembly, but not even the Parliament cannot make laws which violate the Constitution, sir, because the Constitution is supreme and not the legislature. So since the Honourable High Court has also made it clear that Amaravati will remain the capital of AP, I urge the Honourable Prime Minister, who committed to the farmers of Amaravati and to the people of AP the central government's support to develop Amaravati as a world-class city, to bring amendment to the AP Reorganization Act and to insert a provision indicating that Amaravati is and will remain the only capital of Andhra Pradesh. The next point, that I am greatly disappointed that the Honourable Finance Minister has not allocated much for the development of Amaravati, sir. I understand that only a few lakhs have been given by the Ministry of Housing and Urban Affairs Ministry. Sir, it is pertinent to mention here that the High Court of AP has directed the government of AP to construct and develop Amaravati capital city and the capital region as per the approved master plan, and within 6 months as agreed under the AP CRDA Act. Since the government of AP's coffers have become empty and it is not in a position to take up any work, I urge you for allotting sufficient funds to restart the development of the new capital, Amaravati, sir. Sir, the Finance Minister is aware of agitation going on at RINL, Vizag Steel Plant, since the announcement of privatization of this plant. There was a question in this very House on Monday on RINL, and my friend Mr. Ram Mohan Naidu has raised it. We are not happy with the reply given by the Steel Minister. Sir, the Honourable Steel Minister says that RINL was incurring losses. But, sir, he should understand that RINL was incurring losses due to the loan it has taken for restructuring and to purchase ore. Had iron ore mine been allocated, RINL would not have restored to 22,000 crores loan at 14% interest and incur losses, sir. On the other hand, the Minister is saying that SAIL is earning profits. It is earning profits because it has 10 mines, sir, whereas you have not given a single mine to RINL. You give mines to Vizag Steel Plant and see how it will surpass SAIL, sir. So don't privatize it.
Instead, allocate mines and see how the hardworking workers of RINL will bring profits. So I once again appeal to you to kindly allot mines to it and don't privatize. As an alternative, you can convert its debt into equity. Sir, the next point is regarding Polavaram. The revised cost estimates were approved by the Government of India itself and put it at 55,656 crores. This is now before the Finance Ministry. So I request the Finance Minister to please approve this so that the progress of the work is not hindered and R&R can be taken up at the earliest. Sir, on the issue of resource gap, there's a difference of opinion between the Government of AP and the Government of India. I understand that a team of officials from Government of AP have met officials of Government of India last month and discussed various issues, and this issue was also one among them. The Government of India has given 4,117 crores out of 22,948 crores put forward by the Government of AP, sir. Sir, even if you look at the CAG report, the audit, it approved 16,078 crores as the resource gap. So I request to please kindly thrash it out and pay this amount to Andhra Pradesh, sir. Sir, now coming to the national issues. The economic survey projects the GDP growth for 22-23 at between 8 to 8.5%. Recently, the RBI has projected 7.8% growth. But the reverberations of war, geopolitical scenario around the Russia-Ukraine conflict, and looking at the US and NATO's deployment of jets and nearly 30,000 troops in Norway and carrying out war exercises, I feel it further will tilt the balance of risks downwards, sir. It is a tough scenario for a country like India. So I would just like to know whether any fresh assessment has been made about the growth in the light of the latest developments by the Finance Ministry may kindly be explained when the Finance Minister responds. Will there be any change in the forecast to GDP growth this year due to war and other geopolitical risks that we are facing? Sir, as I said in the beginning, we have achieved record exports of $400 billion in the current fiscal. But in spite of this, if you look at the trade deficit, it also shot up to $21.2 billion in February and is expected to go much beyond this month. Sir, also the current account deficit could be around 2.6 or 2.7% of GDP compared to this year's 1.7% and is much higher than the average CAD of 1.1% between 14 and 21. The Honourable Finance Minister is very well aware that if there's a 10% rise in crude prices, the CAD would widen by nearly 30 basis points, and the Ministry has assumed average crude price of $75 at the time of presenting the budget. But now, if we look at the current price, it's well beyond that. So some calibration needs to be made, even on this account, sir. The next point is about inflation. Sir, inflation is hovering around 6%. The U.S. is seeing nearly 8%, which is the highest that country has seen in more than 40 years. I hope our inflation is manageable. Sir, if crude prices go up beyond $100 and stay for a reasonable period of time, which appears to be possible by the way the U.S. and NATO are growing, I agree that it's a tightrope walk looking at India importing 85% of its oil and 50% of its gas requirements. Sir, 2 more minutes now, sir. No. And we are already feeling the pinch of inflation 1 minute. with rising prices of essential commodities, more particularly after the increase of price of petrol, diesel and cooking gas. Sir, regarding our investment from our oil PSUs, I'm just quick points I'm making, sir, such as IOC, OVL, etc. in Russia, which is to the tune of, I think, about $16 billion. Our companies have invested in Rosneft, Sakhalin, Vostok, Vankerneft, etc. Shell, ExxonMobil and Equinor are exiting from Russia, and British Petroleum has already announced its exit from Russia. So what would be the fate of our investments in Russia may kindly be explained. Sir, I'm skipping to the conclusion, sir. Sir, drivers of Gati Shakti include railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure. Due to time constraints, I'll just touch on a couple of points, sir. Sir, Gati Shakti is highlighting the importance and need for a quality multimodal transport, since the cost of average logistics and transportation in India is around 14% when compared to the global average of around 7 to 8%. I hope that the Gati Shakti will help in achieving overall cost competitiveness. Sir, the FM has set a target of 25,000 kilometers of national highways for 22-23.
I was just going through the construction of national highways during the last few years and found that the maximum per day construction is around 37 kilometers per day in 2021. And if you calculate, it comes to 13,500 kilometers per year. Now you've set a target of almost to double that best achievement that we've had till date. To achieve this, we have to construct 68 kilometers a day, which does not appear to be a realistic figure. I request the Finance Minister to explain how we would achieve this. Sir, the Finance Minister also proposed 400 new Vande Bharat trains in the coming 3 years. Now we have just 2 trains, and each train is around 100 crores as per the estimates of railways. It means for 400 trains we need 40,000 crores in 3 years. And more than that, do we have the capacity to build 400 trains in 3 years also needs to be assessed. Yeah. And you're also proposing 100 cargo terminals, waterways, airports, etc. I have given just 3 examples, sir. I have figures for all other drivers, and I only conclude by saying that the targets are too ambitious and not realistic. Let us have realistic, practical, and achievable targets rather than giving a rosy picture like disinvestment and being disappointed at the end of the day. So I'll go to the final conclusion, sir, which is, sir, war is terrible, sir, and I pray for a quick and sustainable peace in Ukraine. And India has taken a neutral position, but there are certain impacts and outcomes that we must make note of. One is, for example, is the wheat exports. Russia is the 2nd largest and Ukraine is the 4th largest exporter of wheat. With conflict, no wheat is coming out of these countries, and the price of wheat in the international market has also gone up to more than 2,600 rupees per quintal, from 2,000 just before the conflict started. Please. So the MSP it's much higher than the existing MSP also, and this will help our farmers and traders. The second one is for mustard growers. The price is hovering around 6,600 per quintal, which is much higher than the MSP of 5,000. Third, we also have the advantage of exporting cotton, sir, since we are the leading cotton producers in the world. Please conclude. Finally, sir, Russia has offered crude at a discounted price to India, sir. What is the status and volume of this offer? Whether FM has given a go-ahead to get oil from Russia at the discounted price? If so, naturally it has to be insured. And if so, what would be the cost of insurance and how much cheaper would we get it? Can be clarified, sir. Sir, with these submissions, I wish to make and hope that we will get escape from the impact of the Russia-Ukraine conflict and expect to reach the goals set while presenting the Union budget during the next fiscal year. Thank you very much. Thank you. Honourable Member Srimati Supriya Suleji. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on a very important bill. I appreciate that this is the most important part of the bill. We've just passed the budget yesterday. We've had a lot of very good discussions. I would like to start my budget with a line which I still remember, because the honourable member from the Treasury bench has actually confused me. So I'm wondering what really the Treasury bench is saying and what is the thinking of this government. I remember a line here when we used to sit on that side, sir. You remember those days? And Sushma ji used to lead the debate from here. And I remember, महंगाई पर हमेशा चर्चा हुआ करती थी. And after that, there was a tagline this government came up with. आपको भी याद होगा मेघवाल जी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. और मैं सच बताऊं आपको, and I am not afraid to say this, my mother used to tell me कि सच्ची अभी बहुत महंगाई होगी है सुप्रिया, इस बार ये लोग देखो तुमको हरा देंगे, पार्टी कोई भी हो, लेकिन आज देश की जनता बहुत अस्वस्थ है. भी मुझे मेरे माँ की वो शब्द आज याद आ रहे, क्योंकि बहुत सालों के बाद मेरी माँ फिर से यही कहने लगी है. अभी कंट्रोल में 1,000 रुपया. देखो महिलाओं का सुनो मेघवाल जी, इसी महिलाओं के कारण आपकी सरकार यहाँ बैठी है. मुझे अभी भी याद है सर, उज्ज्वला, व्हाट अ वंडरफुल स्कीम, आई सपोर्टेड इट. हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला आप सब्सिडी दे दो, हमने खुशी से सब्सिडी दी, एक विश्वास के नाते कि इस देश की गृह लक्ष्मी को आप पैसा बचा रहे, उसको सिलेंडर सस्ते दाम में देंगे. और आज के लिए आपके लीड स्पीकर क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम सब्सिडी कम कर रहे. ऑयल के बारे में, महंगाई के बारे में पहला थोड़ा सा बोल लो, क्योंकि वो सबसे बड़ी चिंता है. और जो मेरी तृणमूल की बहन बोल रही थी वो सही बोल रही थी कि यहाँ बड़ी बड़ी रशिया की बातें, यूक्रेन की बातें हो रही है, वो भी होनी चाहिए पार्लियामेंट में. लेकिन आज पेट्रोल डीजल, आज जो इन्फ्लेशन आपको पता है, अंडे का भाव कितने में बढ़ा है? 4% से बढ़ा है. अभी
सब्जी का भाव, आप घर जाएंगे तो भाभी से पूछ लीजिए मेघवाल जी, वो भी आज शायद डांटे लेंगी आपको, बुरा ना माने, अभी होली तो खत्म हुई है तो आप बुरा ना माने, भाभी थोड़ा गुस्सा होंगी, लेकिन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सारी इतनी महंगाई हुई है। एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑयल बॉन्ड्स, आई अप्रिशिएट, शायद कोई भी होगी हमसे गलती, बट माई पॉइंट टू दिस गवर्नमेंट इज, आप हमारी सब्सिडी के खिलाफ बोल रहे थे, हमने खुद के लिए तो ऑयल बॉन्ड्स नहीं लिए थे, वी हैड टेकन दोज ऑयल बॉन्ड्स, सो सब्सिडाइज इस देश का जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो मेहनत करता है, उसके लिए वो किया था। टुडे आज ये छाती ठोक ठोक के रोज बोलते हैं पीएम की कल्याण योजना में हम कितना कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में इतनी बड़ी सब्सिडी, अच्छी बात है, यू मस्ट डू इट, इस देश के गरीब के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? सो इट इज अ वेरी गुड थिंग दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, बट डोंट ब्लेम अस कि तुमने ऑयल बॉन्ड्स किसके लिए, तो सब प्राइस कंट्रोल के लिए। आई स्टिल रिमेंबर प्रणब मुखर्जी स्पीकिंग फ्रॉम हियर, one of the tallest leaders of this nation and a great finance minister. He used to explain to us that was the crude oil prices. He used to always tell us कि अगर 100 के नीचे, if this entire price of crude was below 100, it would have been a game changer. इतना ही महंगाई नहीं होती। कल भी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि यस, वॉल्यूम में भी बढ़ा है एक्सपोर्ट, लेकिन थोड़ी महंगाई के कारण बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस। तो यहाँ बोलो तो बैठो तो क्रूज प्राइसेस महंगाई, और यहाँ बैठे तो महंगाई, ऐसा नहीं होता। आई थिंक दिस एंटायर हाउस हैज टू ऑलवेज डू, एंड सब्सिडीज किसी देश के लिए कोई खुद को कम मानने वाली कोई बात नहीं है। गरीब के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? वंचित के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? सो आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट टू टेक दिस इन्फ्लेशन इश्यूज very, very seriously, because this country has voted you in that time only with trust and faith against all this. Talking about oil, which he said, I am very confused. Sir, Twitter पे बहुत एक्टिव होते हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कोई बीजेपी के नहीं, अभी देश के प्रधानमंत्री है, तो हम सबको उन पे हक है। तो मैं उनको सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि उनके दो अलग ट्वीट्स आए। एक में उन्होंने कहा 27 जनवरी 19 को, उनका कोट है, इंडिया रिफाइनरी इंडस्ट्री हैज डन वेल इन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर। इंडिया, व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन एशिया, इज इमर्जिंग एज अ रिफाइनरी हब, रिफाइनरिंग मोर देन इट्स डिमांड। ये उनका कहना है, आई कैन कोट इट, आई कैन टेबल इट। देन इट इज सेड एट 27/2/22, we don't have oil refineries, we import crude oil. They, as an opposition, never paid attention to it. Now that sugarcane, ethanol can make it, our government is establishing network. We welcome that step. Ethanol का हमारी भी कहनी था, आपका भी कहना है, इसमें कोई गलत नहीं है. But I sometimes feel that this government is very, very confused in what they are saying, sir. Even I'll give you the second example. ये जो कह रहे थे, बड़ी टीका टिप्पणी की दुबे जी ने, बहुत अच्छा बोले, हमेशा बोलते हैं पढ़ लिख के आते हैं, तो हम लोग भी एंजॉय करते हैं, अच्छे भाषण सुनना अच्छे है, हम लोग भी एक दूसरे से सब सीखते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है देश में, करप्शन, भले नहीं पता कि नहीं क्या क्या बोले, उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट के बारे में बोले, काफी बोले, अच्छी बात है। एनीबडी इज गोइंग टू क्लीन अप द सिस्टम, वी ऑल यूनाइटेडली स्टैंड इन इम्प्रूविंग अ सिस्टम। बट उन्होंने एक सवाल जो रेज किया वो टाटा ट्रस्ट के बारे में। मैं सिर्फ दो चीजें आपको पूछना चाहती हूँ कि टाटा ट्रस्ट इज अ होल्डिंग कंपनी व्हिच इज रन बाय द टाटास। आई हैव ग्रेट प्राइड इन द टाटा ग्रुप बिकॉज दे कम फ्रॉम माय स्टेट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। JRD टाटा वाज द टॉलेस्ट लीडर हु स्टार्टेड एयर इंडिया, जिनको आप ही सरकार ने, आप ये जो रिजर्वेशन, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज एक तरफ से आप ये जो आप सर, आप भी जहां से आते हैं, रोज हम लोग पार्लियामेंट आते हैं, वहां से बड़ा टाटा दिखता है, वहां दे हैव गॉट इट। देन एयर इंडिया भी आपने टाटा को दिया, फिर आप टाटा ट्रस्ट को क्वेश्चन करे, पता नहीं किस के बच्चों के हेल्प किया, मुझे किसी के बच्चों के बारे नहीं बोलना, अभी वो जो आपका है वो आप इंक्वायरी कर लीजिए, ऑल द अथॉरिटीज ऑफ यू, उस पर तो मैं बोलूंगी बाद में, बट दैट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिग्नल फॉर मी। देन दे केम टू क्रिप्टो करेंसी। नाउ क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो, नाउ दिस इज, आई हैव टू आस्क दिस गवर्नमेंट दिस क्वेश्चन। आई वुड my friend Gaurav Gogoi, I have a slightly stronger opinion than his. Now, Nishikant ji also spoke very well about crypto and I agree with him. आपकी सरकार जो क्रिप्टो के बारे में, जो आपके RBI गवर्नर पहले के बीच पे, everybody's view, मेघवाल जी, is कि क्रिप्टो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? जो चीज गलत है वो बैन कर दीजिए ना। फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? जब तंबाकू पर हम बैन लगाते हैं जो सबके लिए खराब है, तो लगा तो 100% नहीं, 500 उस पर टैक्स लगा तो सिगरेट गुटखा सिप पे। तो क्रिप्टो ऐसी है ना, अच्छी तो नहीं है,
तो अब तो 30% का नंबर कहां से आप पे आ गया? और निशिकांत जी कह रहे हैं ओ देश डरा हुआ है, क्रिप्टो वाले देश से डरे। 30% में आपको लगता है कोई डरा होगा? कोई नहीं डरा होगा। डार्क नेट में सब चल रहा है, तो उस पर रोक डालिए आप इधर कंप्लीटली बैन करिए और कंप्लीट क्लैरिटी लाइए इसके ऊपर दैट द गवर्नमेंट हैज टू हैव अ विजन ऑन क्रिप्टो। योर ओनली कमिटी इज सेइंग इट इज बैड। आपका ही स्पीकर बोल रहा है कि ये गलत है, इसमें लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जिसका बिल ही नहीं है उसके ऊपर 30 पे तो लीगल, तो आप लीगलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो और उस पर 30 कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि क्रिप्टो के बारे में यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन। इफ यू से यू आर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट टेक दिस इनिशिएटिव एंड स्टॉप दिस डार्क नेट एंड ऑल दिस वेयर कॉमन मैन ऑफ इंडिया इज गेटिंग इट। कुछ हार्ड लाइंस लेने चाहिए, अच्छे बुरे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इस देश की हर व्यक्ति जो क्रिप्टो के बारे में जानती नहीं है, पर कंप्लीट बैन लाइए आप इसके ऊपर। हैव सम स्ट्रेटजी एंड कम क्लियर टुडे इन द रिप्लाई, because we have to save our people who are going through such difficult times. और इसका और एक मजा बताऊं सर आपका, ये जो क्रिप्टो में very interesting this government is, cart before the horse it is. There is no data in this government. और उनके I can table it after, I don't want to take the time of the house, but हर सवाल जो जब इस सरकार को पूछा है वो बोलते हैं no data, not that they like data, and even RBI has shown such strong. It's almost, I don't want to use, मेघवाल जी आप बुरा ना माने, अभी होली खत्म हुए तो थोड़ा सा मुझे फ्रीडम दे दीजिए, लेकिन it's almost sounding, I don't like to use this word for my country which I love, it's sounding like a banana republic. कि something is not legal, उस पे आप टैक्स कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं. What are you thinking about this crypto? कौन सा? बनाना रिपब्लिक शब्द था, ये रॉबर्ट वाड्रा का शब्द था, आपने कहां से चुरा लिया? नहीं, सीनियर और सौम्य. The other thing which I need to talk about, I need the clarification from this government is about taxation. Now GST के बारे में गौरव जी बोले, निशिकांत जी बोले, काफी बोला कि ओ आपका हमारा था. We are very proud of what the whole intention was very good of bringing the GST, but again now confusing signals this treasury bench is getting. Say आपका बिल हमने लाया and there is no cooperative federalism. अगर इतना बिल था तो लाया क्यों आपने? And sir, one more thing which I want to bring to this house, and I'm happy Bhagwat Karaj ji, we both come from the state. Bhagwat Karaj ji, I am ill-informed, finance is not my strength. So I want to ask you कि एक नया चीज हमारे स्टेट में निकाली है, देश में होती है हमेशा, especially the states which are not of their ideology thinking governments. If you don't have any compliance issue in the GST, then immediately you put the person in jail. Now, is this something, now you in your own finance bill, under errors on page 6, you have brought in so many. इतना देश, इतनी बड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इतने इंटेलिजंट लोक वाग, आप भी एरर कर सकते ना. वी आर ह्युमन कराड जी, कधीतरी चूक होते हो माणसाकडून, आपले काय आपण देव थोडी आहोत. तर जर छोटीशी गलती झाली तर तुम्ही सरळ जेलमध्ये टाकणार त्याला. And was this discussed in the council? Are you trying to tell us all the finance ministers in this country agreed to this? Please clarify, because this is very very important. किसी से गलती हो गई तो बिल में आप फाइनेंस बिल में एरर्स कर सकते हो, लेकिन एक आध आदमी बेचारा गलती हो गया तो गिव हिम टाइम, उसको टाइम दो कि बोला भैया 3 महीने में, 6 महीने में, हफ्ते में कर दो. पर जेल में जो उठा, आजकल तो स्टाइल हमारे राज्य में तो पूछो ही मत, जिसको उठाते हैं जेल में डाल देते हैं, पूरा नहीं. एंड वन मोर थिंग यू हैव डन in this in this taxation, this is very interesting. I must share this with you. भागवत जी, आपल्याकडे तर जास्तच हे झालेलं आहे की आजकाल निशिकांत जी जिसके बारे में बोल रहे थे, वो पीएमएलए के बारे में बोल रहे थे. आई रिमेंबर, मैं इसी हाउस में थी सर जब वो पीएमएलए के बारे में बोले थे. When he spoke about PMLA, I just 2-3 minutes, I just give 2-3 quick clarifications. PMLA के बारे में बोले थे, what he said is happened. It's very very unfortunate what happened. I'm not going to get into the merits of right or wrong. Who am I to judge anybody? But in the PMLA, this is the same government which has criticized PMLA, has now, sir, you can arrest somebody under the PMLA without a FIR. How can you do that? Please tell me. Even Supreme Court has criticized it. Everybody is asking, कसं तुम्ही माझा काय गुन्हा आहे तर सांगा कराड जी. डायरेक्ट मला काही नाही विचारणार, जेलमध्ये टाकून देणार, म्हणणार आता माझी मर्जी होईल तेव्हा मी FIR करणार. ऐसा थोड़ी होता है सर. This is a democracy. You can't put people in jail like this. So all I'm saying, and even the Honorable Supreme Court has raised its issues. Yes. I urge this government, you wanted to become an investment place for good investments, जिसका उल्लेख इन्होंने किया, गौरव जी ने किया, high net worth individuals. सर सब डरते हैं इस देश में अभी.
I'm not saying चोरी के खिलाफ मैं हूँ क्यों? If you're cleaning the systems, we will stand behind you in one voice, one vote. मेघवाल जी, I'm telling you, आपके साथ खड़े रहेंगे. लेकिन ना इंसाफी मत करिए. जो बेचारा मेहनत करता है, उसका एक कंप्लायंस कम ज्यादा हो गया, चलो इसको ठोस दो जेल में. ऐसा नहीं होता. Please, it will one day come back. I don't want to use Nishikant ji's words. I don't wish this for my worst enemy. मैं कभी नहीं सोचती किसी को जेल डालने से किसका भला होता है. उसके घर में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, इसके हाल कभी पूछो. उनकी क्या गलती होती है. और आजकल तो महाराष्ट्र में फैशन हो गया, बीवी बच्चों को भी नोटिस आने लगे. What does that poor wife know? This is really the tragedy of this nation. Black money के बारे में बहुत सारा निशिकांत जी बोले. Very good. I'm happy. Black money आया देश में तो अच्छी बात है. पता नहीं क्या क्या और बोले. Demonetization आपने क्यों किया? क्योंकि आपने कहा black money आएगा. I am asking Karaji a pointed question to you. That please tell me how much black money came into the system with demonetization and all these foreign things that you're doing. Yes. किती ब्लॅक पैसे आले सांगा. मी आता 15 लाखचा हिशोब पण विचारत नाही. बिचारे अमित शाह जी खरे निघाले. आई रिस्पेक्ट अमित शाह जी फॉर दैट. अच्छा बोले उस दिन टीवी पे बोले अरे ये तो जुमला है. एटलीस्ट ही वॉज ऑनेस्ट. आई लाइक ऑनेस्ट पीपल. आई रियली हॅव रिस्पेक्ट फॉर हिम. खरं बोलले. काय दादे आपले थोडं ते गुजरात मराठी आपले शेजारी सख्खे शेजारी होता आपण. त्यामुळे ते बोलले मी त्याचं स्वागत करते की ठीक है जुमला है छोड़ दिया मैंने. कि 15 लाख का हिसाब नहीं मांगूंगी इनसे. लेकिन ब्लैक मनी का तो मांग सकती हो ना. इतना हम पे अटॅक करते थे ब्लॅक मनी. कराजी काय झालं? उपयोग काय झाला त्याचा? डिमॉनिटायझेशन मधून किती पैसे आले आणि त्यातून हे ईडी आणि ह्याचं तर काय विचारू नका. महाराष्ट्र में एक फॅशन है सर. लास्ट पॉइंट सर. महाराष्ट्र में एक फॅशन है सर कि देर आर पीपल. नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टंट. लास्ट पॉइंट आई प्रॉमिस यू एंड आई वांट टू रेज इट बिकॉज इट्स ऑफ सीरियस कंसर्न. देर आर एजेंसीज ईडी CBI. If somebody has not done compliance, I am requesting you that the system has to be followed. Whether PMLA, वो फलाना ढिकना जो भी आपको करना है करो. But when there is compliance being done, you say that CBI, ED, IT, income tax are very independent bodies. If they are independent bodies, how on Twitter we know who in Maharashtra is going to get raided 3 days, 4 days and 5 days? ये 15 दिन में जेल जाएगा. Are they astrologers? Who are they? How do they know? मेघवाल जी ट्वीट पे आता है और आई कैन टेबल दिस. मेरे पास सर के डॉक्यूमेंट्स है. माई डेट मैं आपको बता सकती हूँ किसका डेट है. बोला इसको जेल में डाल देंगे इसको. सो देर आर ओनली 2 ways of looking at it. Either then you admit that ED, CBI, all these agencies are run by the people in power today. Admit it. सच बोलो यार. अमित शाह जी सच बोलते हैं. आई थिंक आई शुड आस्क हिम ओनली. बाकी का पता नहीं. ये सरकार में कौन सच बोलता है कोई नहीं. वो तो जरूर बोलते हैं. और द सेकंड क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, आर देयर लीक्स? अगर एक पेपर लीक होता है ना तो पूरी इंक्वायरी लगा देते आप. उस अफसर को जेल में डाल देते. जब आपका कार्यकर्ता, मैं आरोप कर रही हूं आज, मैं न्याय मांग रही हूं मेघवाल जी आपके सरकार को कि अगर आपका कोई आदमी, आपके 2 ऐसे आदमी हैं, मैं ट्विटर से प्रूफ कर सकती हूं जिनको रेड कब, जेल कब, ईडी कब सब जानते हैं. कोई नहीं पूछने वाला आपको. कर लीजिए, हमसे गलती होगी फांसी दे दीजिए. यहां भी नहीं, विजय चौक में मुझे फांसी दीजिए, कोई बात नहीं. लेकिन अगर गलती करी होगी तो आई डिजर्व अ फेयर ट्रायल. तो ये ईडी, CBI, ऑल दीज थिंग्स दैट आर यूजिंग आर नॉट फेयर. लाइफ इज अ फुल सर्कल मेघवाल जी. कभी हम भी वहां बैठे, हमसे शायद वो PMLA की गलती हो भी गई होगी शायद. थैंक यू बट इट डिड हैंग अस वन डे. तो ऐसा आप मत करिए. थैंक यू. Be fair and be just is my only request. There are some points I wanted, but I appreciate that you will think over all this and make sure this is a safe environment for every Indian who's happy to pay tax for the betterment of this country. Thank you. Thank you. Sir, thank you, sir. Due to lack of time, I am raising some points only. Number one, regarding all members have told here that about the price rise of petroleum products. Sir, my request to the finance ministry is to arrest this price rise of petroleum and diesel. Because in all over India, especially the poor people are suffering now. Because taxi drivers, auto rickshaw drivers, they are not getting passengers in their vehicles. So my request is to arrest this price rise of petroleum and diesel. And another long pending demand to the government is petroleum products should be included in the GST. Sir, I know most of the states are opposing that, but the tax is different in not only in
whole India, but in my state, Kerala. Sir, my constituency is Vadagara. Between Vadagara and Talashiri, that is the major two towns belongs to my constituency. Yeah. From Vadagara to Talashiri is only 13 kilometers. Between that, Mahi. Old Mahi belongs to Pondicherry. New Mahi belongs to Kerala. In old Mahi, petrol and diesel price is less than in Kerala. If 95 rupees for diesel in Kerala, only 85 in Mahi, old Mahi. So my request is if you can include petroleum products to GST, the price rise of petroleum products should be controlled. So this is the most of the political parties also requested that GST, the petroleum product should be included in GST. Sir, number two, I want to say important things to the finance minister, because finance minister told that Calicut airport is going to be privatized. Sir, in Kerala there are only 4 international airports: Trivandrum, Kochi, Calicut and Kannur. Kochi and Kannur are joint venture of state and central. And two airports belong to civil aviation, that is Trivandrum and Calicut. Now Trivandrum has given to Adani. Few days back, finance minister told we are also privatizing Calicut airport. The main problem in Calicut airport, day before yesterday, civil aviation minister told that a major accident was taken place in Calicut 2 years before. Now the situation is big flights are not coming in Calicut. Calicut is the Hajj embarkation points also. Now, because of the suspended of big air service, now Hajj embarkation point is also suspended. So my request is, so Kerala government is telling that Calicut airport is going to be privatized. Then why we are acquiring the lands? Civil aviation minister told that we want minimum 20 acres for the development of runway. State government is telling that if you are going to privatize the airport, why we are giving, for acquisition land for the airport development. So my request is, please don't privatize Calicut airport. And till the development work, the Hajj embarkation point should be in Kannur International Airport, because most of the Hajj pilgrims are northern part of Kerala. Now the Hajj embarkation point is in Kochi. They should travel minimum 200 kilometers from Malabar area to Kochi airport. So till the development work will be, till the development work of Calicut, my request is Kannur airport should be the Hajj embarkation point. Number 3, sir, about this is a common thing, every MPs will join with me, I think. The increasing of MP LAD fund. Sir, in our fund is only 5 crores. You know, sir, in Kerala, MLAs are getting 6 crores in a year. In Kerala, one parliament constituency means 7 assembly segments. So MLA is getting 6 crores for 1 assembly segment. MPs are getting only 5 crores for 7 assembly segments. And second thing is implementing officers. Sir, you also complained at that. Officials are not giving priority to MP fund. They are giving priority to MLA fund. In my fund also, in 2019-20 fund was not utilizing because I have given suggestion, but officers are not minding for that. Even in review meetings is also not going on. One review meeting held in last week when the parliament section time. So give instruction to collectors to implement MP fund in the proper time. So that is my request. Sir, the third thing is Hindustan Latex in Tiruvandhuram. That is also going to be privatized. So the state government told that we are ready to take over it. But government is telling that we are not ready.
central government is telling that we are not giving to state government, and the state government is not permitting for disinvestment activities also. So, Kerala Chief Minister told the Prime Minister, please allow some state government to participate in the disinvestment process, or it should be shifted to the state of Kerala, because land is given by the state of Kerala for Hindustan Latex. So now it is all going to private sector. So kindly allow state government for this disinvestment process, or given it to state government. Sir, another thing is, in the railway, senior citizens' right is suspended for the COVID period. Sir, the COVID pandemic is over. Not over, it is partially over. But the right of the senior citizens is not reintroduced. So my request is, please allow senior citizens' right for traveling in trains. And the last point, sir, I want to mention about the K-Rail project. Sir, yesterday, Chief Minister of Kerala met Prime Minister and requested for the sufficient fund from the central government. Sir, yesterday in the Lok Sabha, Railway Minister told that the total cost, Chief Minister of Kerala told that only 64,000 lakhs for the total cost of K-Rail project. But Central Minister yesterday told Lok Sabha that minimum 1 lakh crores will be the cost of this K-Rail project. Sir, it will be a very much burden, not only state, it is also a burden to central government also. And all people are agitating in Kerala state. Day by day, Lathi charge are going on. And the Kerala government is putting stone in everywhere in Kerala. So, my request is, please write to the Chief Minister that to stop the putting stone in everywhere in Kerala, or the government should withdraw from the joint venture, because this project is a joint venture. So my request is, please, central government should withdraw the K-Rail project scheme. And sir, one more thing, yesterday, 2 members from Tamil Nadu, CPI members, they have shown that we want K-Rail. Sir, K-Rail is running from, this project is from Trivandrum to Kasaragod. It is not going to Tamil Nadu. If they want K-Rail, the CPI members from Tamil Nadu, if they want K-Rail, we have no objection. That is none of our business. So my request is, K-Rail project should be cancelled, and the central government should withdraw from this joint venture. Thank you, sir. Thank you very much. श्रीमती सुनीता दक्कल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। यूनियन बजट 2022-23 में जो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन दिया है, और उसमें जो हमारा फाइनेंस बिल है इसमें 39 जो हैं अमेंडमेंट्स हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने एक अभिभाषण में कि कर प्रणाली जितनी सरल होगी, अनुपालन सुनिश्चित करना उतना ही आसान होगा। और आप ये देखिए कि अपने बहुत पहले जो है चाणक्य ने भी जो है अपने जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसमें कहा था कि कर हमें इस तरह से लेना चाहिए जिस तरह से मधुमक्खी जो है वो फूल से शहद लेती है, तो उसमें दोनों में किसी को नुकसान नहीं है। दोनों जो है वो बिल्कुल, वो भी अपना शहद जो है ले लेती है और फूल को भी किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो है, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का और हमारे करार जी का, MOS साहब जो हैं, कि इन्होंने जिस तरीके से जो है वो कर की प्रणाली को सरल भी किया है, और इसके साथ साथ जो है वो जितनी भी योजनाएं हैं उसमें एक गरीब आदमी को अंत्योदय के माध्यम से उसको सब कुछ पहुंचे, उसका जो है लाइफ इजी हो जाए, उस सब के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि पहले कोई समय था कि जिसमें जो टैक्स पेयर है जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हुए डरता था,
और आप ये देखिए कि अच्छे भले परिवार का जो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी जब ये मालूम पड़ता था कि असेसमेंट के लिए मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है तो वो अपने कपड़े पहले बदलता था, थोड़े फटा पुराना सा कुर्ता पजामा वगैरह पहनता था, चप्पलें ऐसी पहनता था ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को ये ना पता लग जाए कि मैं बहुत रिच हूं। लेकिन अब जो है उसमें स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि आयकर विभाग की जो मेन टैग लाइन है वो है कोष मूलो दंड, कि कोष मतलब धन, मूल रूप से शक्ति है। जो धन जो है वो किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो धन है, और धन को किस तरह से एकत्रित किया जाए और उसके बाद किस तरह से आम जनता के लिए उसको लगाया जाए, ये किसी भी नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। और हमारा जो आज की तारीख में जो हमारा नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मन में ये भाव है कि हमें जो टैक्स कलेक्ट करना है वो भी बिल्कुल आराम से करना है, और उसके बाद लोगों के अंदर किस तरह से उस चीज को फैलाना है, इस चीज का भी वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं देख रही थी कि अभी यहाँ पर हमारी माननीय सांसद जो हैं शताब्दी जी और सुप्रिया जी, तो इतने प्यार से, इतने मैं कहूंगी कि इतने सौम्य तरीके से जो है वो थपकी मारती हैं कि जो है वो सामने वाला इंसान जो है वो ना रो सकता है ना हंस सकता है। बड़ा सभ्य उनका बड़ा सौम्य तरीका है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनको। वो हमेशा ही जो है अपने मन के गुबार को, अपनी मन की बात को बहुत ही सौम्य तरीके से रखती हैं। तो अगर उनको जो है चिंता है अपने राज्य की, तो क्यों नहीं वो वहां पर जिस तरह से हमारे निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल सरल स्वभाव में बताया कि किस किस राज्य में कितना कितना परसेंटेज जो है वो वैट का है, अगर उनको लगता है तो क्यों नहीं वो वहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहां पर उनकी सरकार है महाराष्ट्र में, वैट को क्यों नहीं कम करते हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या दूसरे को जो है कटघरे में खड़ा करना तो बहुत आसान है, अपने पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया जाता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि जो अभी इसके अंदर अमेंडमेंट्स हमारी आए हैं, जैसे उसमें सेक्शन 68 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं, पहले पिछले की सरकारों में देखिए इस तरह की बातें, इतनी बातें हो चुकी हैं कि जो है हमको उनको दोहराना ही पड़ता है कि पहले कौन किससे, अपने ही किसी साथी से, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, बहुत बड़ा उदाहरण जो है उनमें केसेस भी चल रहे हैं। अगर आप इसको बारीकी से अगर आप सोचेंगे कि अपने ही किसी इंडस्ट्रियलिस्ट साथी से लोन लेकर और फिर उसी के इंडस्ट्री में उस लोन को जो है उस पैसे को लगा देना, इस तरह की बहुत सी पहले की सरकारों के अंदर हमने देखी हैं, बहुत से उदाहरण देखे हैं। तो हमारी सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई भी गोलमाल ना हो। तो आप ये देखिए कि 60% जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा अगर किसी ने कोई पैसा लिया है और उसके पास कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सीधा स्टेट वे उसके ऊपर 60% का टैक्स लगेगा, ताकि इस तरह की जो पहले जो इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं उसको जो है उसमें बचाव किया जा सके। और इसके बाद आदरणीय सभापति महोदय, बहुत सी बातें क्रिप्टो करेंसी के बारे में हुई। तो देखिए सरकार की कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले वो धरातल से जो है किसी भी चीज को शुरू करती है। जैसे कि जब जनधन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी तो सबने बहुत इसके बारे में कहा था कि सबके खाते खुल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें पैसे आने वाले हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि विपक्ष भी इस बात की दलील देगा, इस बात को जो है अप्रिशिएट करेगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो हमारे गरीब जो हैं, जनता जो है, उनके खातों के अंदर सीधा पैसा पहुंच जाता है, क्योंकि उनके समय में ही उनके ही जो है प्रधानमंत्री, जो उस समय में पूर्व प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने ये कहा था कि पैसा कितना ऊपर से चलता है और नीचे कितना पहुंचता है। तो ये अभी, और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मैं फिर से जो है आदरणीय हमारी शताब्दी जी और हमारी सुप्रिया जी के बारे में कहना चाहूंगी कि उन्होंने एलपीजी के बारे में बात की। सरकार की जो है वो एक योजना है, सरकार ने क्या किया, उज्ज्वला योजना के तहत, सभापति महोदय बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रही हूं कि उज्ज्वला योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा कि जिसके पास गैस का सिलेंडर ना हो और जिसके पास बर्नर ना हो। एक बार ये सिस्टम जिसके पास आ गया, अब आप देखिए कि सरकार की एक ऐसी योजना है कि जिसके तहत जो बायोमास का गैसिफिकेशन है, मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिरसा में अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद वहां पर 20 ऐसी जगह पर देखे कि जहां पर पहली बार में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो गोबर का लगता है, उसके बाद जो है डेली सिर्फ 2 बास्केट जो है वो गोबर डालने से गैस इतना बढ़िया मिलता है सभापति महोदय कि अगर आप देखें तो हैरान हो जाएंगे कि इतना तो हमारा सिलेंडर से भी उसका फ्लेम नहीं आता जितना सिलेंडर का फ्लेम, जितना जो फ्लेम है उस गैस से आता है। तो क्यों नहीं ये अपने इलाके में जहां कहीं पर भी आप जब बर्नर मिल गए हैं तो वहां पर बायोमास के लिए, जो बायोमास की गैसिफिकेशन है उसके लिए क्या इन्होंने किया,
मैं पूछना चाहती हूँ, जरा बताएं। मैंने अपने उसमें बताया कि एक गांव की बात कर रही हूं मैं सिर्फ, और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है पूरे इलाके के अंदर फैले, क्योंकि इससे गांव भी साफ होगा और इसके साथ साथ उनको बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगने वाला उसके अंदर, सब्सिडाइज सरकार की तरफ से, सभी जो उसके जो छोटी मोटी जो पाइप लगाने का सिस्टम है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो क्यों नहीं वो इस तरह से करते कि एलपीजी उनको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो। तो सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ कहना चाहती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी, उसी तरीके से ये मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिए हैं, चाहे जनधन योजना का दिया है, चाहे मैंने उज्ज्वला योजना का दिया है, तो क्रिप्टो करेंसी में सरकार ने 1% टीडीएस लगाया है। उससे क्या होगा, उससे ट्रैकिंग होगी, जो भी टीडीएस जिसका 1% कट जाएगा, ये पता लग जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर पिछले 1-2 साल के अंदर 641% इन्वेस्टर्स जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर बढ़े हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। तो उसको किस तरह से कर्व करना है, उसको किस तरह से ठीक करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो है वो इतनी दूरंदेशी है कि जरूर इसके बारे में कोई ना कोई बहुत बड़ी सोच लेकर वो इसके ऊपर जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अपडेटेड टैक्स रिटर्न्स, देखिए बहुत बार पहले क्या होता था कि इसमें सभापति महोदय कि जो चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रॉपर टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो फर्म होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे आम छोटे जो हैं नागरिक हैं, उनके लिए उनको इतनी दिक्कत आती थी इसमें कि छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती थी तो उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी, इंटरेस्ट भी लगता था, पेनल्टी भी लग जाती थी। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है कि अपडेटेड टैक्स रिटर्न के 3 साल के अंदर एक टाइम पीरियड दिया है, उसके अंदर अगर कोई भी गलती है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं और अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ब्लैक मनी एक्ट है, जो लोकपाल एक्ट है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, इस तरह के जो केसेस हैं उनको ये सुविधा नहीं दी गई है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय, जो टैक्स में बहुत बार अपील में चले जाते थे, जबकि कोई ऐसा कोई उसके अंदर टेक्निकल इशू नहीं होता था, सिंपली अगर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट अब जो है उसमें अपील में नहीं जाएगा, इस बात का भी प्रावधान जो है अब की बार के फाइनेंस बिल में रखा गया है। एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपी होता है सभापति महोदय, तो उसमें क्या है कि जो कुछ वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे हैं वो मार्केट में एक कंपनी बनाकर और उसको कंसोर्टियम करके बोलते हैं उसको, तो उसमें उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज 37% तक हो जाता था। सभापति महोदय, इस फाइनेंस बिल के अंदर जो है उसको कैप लगा दी है और अब 15% जो है इससे ज्यादा नहीं होगा, और एओपी के लिए 15% जो की कैप लगाकर उसको अब इतना ही जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज जो है उससे लिया जाएगा। और फेसलेस टैक्स असेसमेंट की मैं बात करूं, हालांकि इसके अंदर शुरू में एडमिनिस्ट्रेशन को भी और साथ साथ टैक्स पेयर्स को भी दोनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सेक्शन 144B के अंदर अब जो अमेंडमेंट की है उसके अंदर इसकी ओवरहालिंग की है और इसके अंदर बहुत अब जो इजी हो जाएगा टैक्स पेयर को जो है वो टैक्स पे करना, और जो पहले तो थोड़ी बहुत एक टीदिंग प्रॉब्लम होती है किसी भी नई स्कीम को लाने में, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने देखिए जो कोविड-19 में जिस तरह का वातावरण चारों तरफ रहा और उसमें हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी उसको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा, तो इसके अंदर वो पेशेंट्स जिनका पेमेंट जो है वो इसके लिए जो है कोविड-19 में जो बीमारी उनको हुई उसकी वजह से जो उनको एक्सपेंसेस करने पड़े, उसके अंदर सरकार की तरफ से जो है वो रिलीफ दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर उनके परिवार में कोई डेथ होती है और 12 महीने के अंदर अंदर उनको जो पेमेंट मिलती है तो 10 लाख तक की कैप लगाकर उसके ऊपर भी टैक्स रिलीफ जो है फाइनेंस बिल में सरकार की तरफ से दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। और एक मैं इसके साथ साथ सभापति महोदय ये कहना चाह रही थी कि ये सब चीजें जो है, जैसे कोष मूल्यदंड की मैंने बात की, तो ये कहते हैं कि जो भी हम धन एकत्रित करते हैं गरीब के कल्याण के लिए, जो योजनाएं बनाते हैं उसके लिए, तो राजस्व राज्य प्रशासन का आधार, बोलते हैं कि राजस्व राज्य प्रशासन का आधार, इसलिए बिना डरे करें इसका सत्कार और बने देश के विकास में भागीदार। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी हम बात करें सभापति महोदय, हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी अभी कल परसों जो बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब उन्होंने ये बात कही है, भरी सदन में ये बात कही है, और उनकी बात जो है हमेशा आपने देखा होगा कि अपनी बात पे पूरा उतरते हैं वो, कि 2024 दिसंबर तक जो है वो हमारा देश जो है अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। जो रोड्स हैं, हमारे नेशनल हाईवेज जो हैं, आप देखिए कि, और आप ये देखिए कि जब भी कभी कोई बात होती है कि चाहे हम डिमांड फॉर ग्रांट्स नेशनल हाईवेज के ऊपर बात कर रहे थे, चाहे हम हेल्थ के ऊपर बात करें, चाहे हम जो है एयरपोर्ट्स के ऊपर बात करें, सभी सांसद महोदय खड़े होकर उसी टाइम कहेंगे कि जी हमारे फलाना हाईवे चाहिए, हमें फलानी हमारा एयरपोर्ट लगा दीजिए, हमारे वहां पे रेलवे का। ये सब आएगा कहां से?
ये सब कहां से आएगा? इसके लिए जो धन एकत्रित करने की जो बात है, तो वो उसी के उसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो इस फाइनेंस बिल में है। और इसके साथ साथ आदरणीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी कि कंक्लूड करो। जी बस बिल्कुल मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि पहले की सरकारों में जिस तरह से धन को एकत्रित करने की, खासकर ये मैं कहना चाहूंगी कि ब्लैक मनी जिस तरह से इकट्ठा कर करके बहुत से, और वो आज उस चीज को भुगत भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबको अपने किए का फल जो है वो भुगतना पड़ता है, कि उसमें फिर तिल मिलाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्योंकि मैं अंत में सिर्फ ये बात कह के समाप्त करूंगी कि अहम की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती, अहम की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो धन्यवाद। रोने की जरूरत नहीं होती है, अगर जिसने गलत किया है तो उसको गलत जो है उसका फल भुगतना भी पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय हमारी जो मंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस फाइनेंस बिल के लिए, और मैं इसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। शेयर को भी धन्यवाद देना इतना समय देने के लिए। नेक्स्ट पीवी मिथुन रेड्डी जी। Thank you, sir. And first of all, I would like to congratulate Shri Nirmala Sitaramji, Karadji, and the whole finance team for having put up a good effort post-COVID also and during COVID also, sir. This is evident from the fact that the tax buoyancy has improved and the GST collections have gone up substantially. So I think they need a good appreciation for this. Our party appreciates their effort in the country's perspective, sir. Before I go into the national perspective, I would like to talk about the state issues because of the paucity of time. Sir, the first and foremost thing, sir, what was promised to us during bifurcation of the state is Polavaram project. There's huge confusion, sir, for Polavaram project. We have asked hundreds of times. It was clearly written in AP Reorganization Act that Polavaram project will be completed in total and be handed over to the state, sir. And the state had already spent money on that, which was supposed to be taken up as equity. But every day, sir, every day there is some issue or the other, and there's some litigation which is coming up from, say, if it is not from Jal Shakti, it is from Finance Department. This is not fair. Polavaram project is a national project and was promised to us saying that it will be completed in time. So central government should support us heartfully, sir. We don't need a half-hearted support in this aspect. And I would also like to bring to the notice of the government that Visakhapatnam steel plant is very important. It's something to do with the sentiment of the state. It is not a loss-making venture. This year, we are definitely sure that Visakhapatnam steel plant will make good profits, sir. I've heard, like in the replies, they're saying that we are going to sell loss-making unit, but there's just 6 or 7 days left for this March month to complete. And I want the ministry also to take a note of this, sir, because it's going to be profitable, and even the years to come, steel industry is looking very bright, and it's going to be in profits. We request the government to think of improving Visakhapatnam steel plant by allotting captive mines. And, sir, I would like to point out that when BSNL is a loss-making thing, the government should think of privatizing BSNL or things like that, which is going to make a loss, but not Visakhapatnam steel plant. And we have seen, sir, recently there have been a lot of students who have returned from Ukraine. The thing is that we are not able to provide them medical education in the country, sir. A lot of people are going there because they're getting cheap education. And the standard is also not bad, sir, what they're providing Ukraine or Philippines. So the state government has taken up a very good initiative. Our Honorable Chief Minister has taken up a very good initiative. He is setting up 13 new medical colleges, sir. They are in various stages of progress. So I request the government to come forward, sir, because there should be a long-term solution. Our students can't go for education outside. We are talking of Atmanirbhar Bharat. But where is Atmanirbhar Bharat in education? Why should our students go out when we have very good teachers, when we have very good staff here? So I request the central government to support these medical colleges in the interest of the nation. And I will also request the government to support for our fishing harbors and the ports, sir. The government will not be at a loss, because whatever we transport through these fishing harbors in the small vessels, throughout the country we can transport them. So there are thousands and thousands of trucks which go from Andhra Pradesh, be it fisheries or fisheries product fish or rice or any other agri-products. A lot of things get transported from Andhra Pradesh. But if we make use of these 9 fishing harbors,
which AP is doing, and these ports, new ports which AP is developing, I think a new ecosystem will develop, sir. And the government will get back their revenues in the form of GST. The government should, I request the central government to support these fishing harbors and these ports, sir, because ultimately they are also going to enjoy the revenues and enjoy the tax collections from these ports. And the money will be recovered in a very short span. It makes very good business sense for the central government also. And it will be useful for the public also, sir. So I request the government to support these ports and fishing harbors. And the dues for AP Civil Supplies Corporation, sir. Right from 2013-14, it is the money which has to be reimbursed for the state. More than 1,700 crores is pending. We request the central government to come out with all the things, because CAG is already ratified and they are, we are eligible for the reimbursement, so they should immediately do this. And first and foremost thing in the BJP manifesto in 2014, when they went for the elections, was a special category status. We were given unviable finances after our state was split. We have the most unviable finances in the country, sir. So we demand special category status. We want the government to keep up its word. And it is not a request, sir. What we have promised, what was promised on the floor is this House, we are demanding a special category status. And even the revenue deficit grant also has not been completely reimbursed. And I have raised issues regarding mango farmers during the discussion, even in the Commerce Ministry. So I would like to bring to the notice of the government, sir. I would like the attention of the Honorable Minister, sir. Sir, there is a discrepancy for mango pulp and mango puree, sir, where GST is being charged at 18% instead of 12%. So it is different, sir. There are farmers in Gujarat, there are farmers in Karnataka, Andhra Pradesh who are dependent on mango. There are people there in Maharashtra, throughout the country, sir. Each state is interpreting in a different way, and now people are being asked to pay retrospective at 18%. So it's going to hit the poor farmers and it's going to kill the industry, sir. This is not a good move. So I request the government to inform the concerned authorities. We will submit a representation of the same also, sir. The farmers should be protected and the tax slab should be at 12%. I will tell you why, sir, because this is just an intermediate process. There is no loss to the government because it is not the final product what they are going to sell it. And there are various other issues also for the farmers, sir. For example, if you are transporting fish with ice, there is no GST. But if you transport cut fruit in ice, adding some salt as preservative, they are charging 5% GST. So this is not fair. So I request the government to sit with the Food Process Association, with the Farmer Association, and sort out all these glitches which is there, because it is something to do with lives of lakhs and lakhs of farmers, sir. Please take this at topmost priority and sort this issue, sir. Sir, I like to proudly tell that all 40,000 government schools in our state are being renovated in Nadu Nedu, sir. They are on par with corporate schools, and the gross enrollment ratio is going up. And I've been asked for recommendation letters for admission into my constituency government schools, sir. They're putting up no admission, there are no admission boards for these schools, sir. So such is the thing effort our CM is putting in terms of schools. So I would like the central government to support for this program, this novel program, where all the schools are being renovated and all the poor people get a fair chance to get a very good education. So even the other states have announced, sir. Even the UP has announced, Telangana has announced similar lines, what AP is doing. So I request the central government to support this scheme, sir. Without education, the country will not move in the proper education, will not move in the right direction. So, and coming to the other issues, sir, issues where payment is pending from central government, sir. There will be, people are being asked to pay advanced GST even before the realization of the payments. Last time I raised this and they said it's a prerogative of the GST Council. The Honorable Finance Minister, being head of the GST Council, should initiate this and see that without realization of the payment, when people are in stress and government is trying to come up with incentives and support, that too when government is not paying the people, how can GST be collected in advance? So there should be proper justice in this. Only upon the actual realization of the payment, GST should be collected in such cases. I want the Honorable Minister to propose this also. And, sir,
in the national perspective, you see the current tax threshold is 2.5 lakhs. It is fixed at 2014. But the inflation has increased a lot, so the poor people will not be benefited. The threshold limit should be indexed to inflation so that the benefit will be there for the basic slab, the bottommost slab, where we don't need to pay the income tax. And all the slabs also need to be rationalized. There are various slabs and it is confusing for the people. And in terms of this faceless assessment and other things, sir, the proposed substitution of section 144B that deals with the procedures around faceless assessment, which was introduced just the previous year, has been amended, sir. And there have been 150 amendments, which is not good, sir. There should be some clarity. There's a lot of confusion. Such huge amendments is not good for the thing. And, sir, important thing I would like to bring to the notice of the Honourable Minister also is that the decreasing interest rates for various saving schemes, sir. Recently, we have seen PF deposits were slashed for 2021-22 from 8.5 to 8.1, sir. After COVID and during the COVID, people have spent a lot of money, sir. Poor people, directly, indirectly, they've spent a lot of their money. They lost their lifetime savings. So I think even the small changes will make a big difference for the poor people. I think the government should step in and come forward and see that it is not reduced. And there are reports that the interest rate on small savings, other small savings schemes might also be lowered, sir, which is not good. So we want the government to intervene and see that the interests don't come down on the savings of poor people. And the one good thing that the government has done by amending section 115 BBH of the IT Act, they have put tax on cryptocurrency, which is good. Without banning that cryptocurrency, they have put tax. It's a good move. But retrospective tax on anything, even be it cryptocurrency or anything, is not good. So the retrospective tax must be rethought. And relief to startups and manufacturing companies, sir. If you see, the government is continuing the 7% concessional tax rate for till March 24, which is a welcome move. And additionally, even they are doing incentives for startups before March 23, which is also a welcome thing. Sir, we want proper utilization of the Startup India scheme, where only 37.46% of the funds was used and only a meager 50 crores has been allotted. This is a very good scheme for encouraging entrepreneurs. So I think the government should make sure that more people get benefited of the scheme and remove the glitches, because we are not even able to spend what was allotted, and very small amount has been allotted, only 50 crores, 2 minutes. Sir, if you see the most important thing, sir, we are talking of a cooperative federalism and Sabka Saath, Sabka Vikas. But if you see the total gross tax revenue collected is 27.5 trillion, sir. In that, the states are getting only 8.1 trillion. And if you see what the Finance Committee has recommended, they have recommended 41%, sir. But actually, if you see, there is 18% surcharges and cesses which is being doing. And states are getting only 29%, which is not fair, sir. So government should, in the true spirit of cooperative federalism, they should help the states. It is, when the government is, central government is saying Sabka Saath, Sabka Vikas. Now it is like Sabka Saath, Center Ka Vikas, sir. It should be, states also should be treated fairly. They should get their funds. And in the end, sir, I would like to again reiterate that AP Reorganization Act, lot of issues have been pending in the AP Reorganization Act. I want the central government to, central ministers and central government to step forward and sort out the issues for Andhra Pradesh. Thank you very much, sir. Thank you. Shri Pinaki Mishraji. Thank you, Mr. Chairman, sir, for calling upon me on behalf of the Biju Janata Dal to speak on the tax and non-tax proposals in the finance bill of 2022-23. First, the tax proposals in the finance bill. Mr. Chairman, sir, it's a matter of dismay, I think, if not alarm, for all of India to have seen what we did during the UP elections when income tax raids took place in Kanpur, and we found piles and piles of cash
it took the income tax department some 5 days to count the cash. And even then, I think there were no figures that were matching. At some point, it was 180 crores, at some point, 230 crores, 235 crores. This is a mountain of cash which is floating around in our economy. The Honorable Prime Minister, in a lightning strike on the 8th of November 2016, called for demonetization. The objectives of demonetization were removal of black money and bringing in a digital economy, was to do away with fake currency, was to curb terrorist financing. My Chief Minister, Mr. Naveen Patnaik ji, believing in the Prime Minister's noble objectives, was one of the first Chief Ministers to come out openly in support of demonetization. I think the Prime Minister's dream and his vision has been belied. I think the Treasury benches, which are unfortunately empty as I speak today, will be the first to understand and recognize that the Prime Minister's vision has been completely belied. Not only did the 16 lakh crores then, which were demonetized, come back in its entirety. Supriya Sule ji asked a question. I'd like to ask the government how much black money came back. Oh, all the black money came back. Nicely laundered, cleaned up, washed up, laundered. So all the black money came back. In fact, my memory serves me right, some 30,000 crore more than the issued currency also came back. So which means 30,000 fake currency also came back into the government system. And the government is still silent on how much tax they managed to actually get back from the laundered money. I don't think that's, because they are saying it's all wrapped up in litigation. I'm sure it will be wrapped up in litigation for the next 20 years. What is the position today? It was 16 lakh crores of cash money in circulation in 2016. Today it has gone up to 29 lakh crores. It's almost doubled. This is the position today with regard to cash currency in circulation. Somewhere, this government has to acknowledge that it has been no different than the Congress government of the 60s, 70s, 80s, because of which there is a legacy of black money in this country. Because in those days, I remember when I was a child, I used to be told, my father was in the Swatantra Party, which always asked for liberal tax policies against the Congress's so-called Fabian socialism. My father used to tell us that the tax slab at one time in India was 110%. If you earned 100 rupees, you paid 110 rupees in tax. This was the tax slab, with income tax, wealth tax, all other surcharges included. Which is what has given rise to black money in this country, which is what has given rise to aversion to paying tax in this country. And no matter what Mrs. Dugal, who is herself from the department and therefore has a much rosier picture about the department than most of us have, Mrs. Dugal said the department has now become much more user-friendly, able-friendly, etc., etc. I don't think anything of that sort has happened. We are still in a country of 130 plus crores. There are only 2.5 crore tax assessees. And tax assessees are not taxpayers. The taxpayers, I think, are barely run into some 25 odd lakhs. The rest file nil returns. So they are actually not taxpayers. They are only for the namesake, they are tax assessees. So taxpayers, therefore, out of 130 crores is 25 lakh direct taxes. And out of that, only 8,000, regrettably, are over that figure of 5 crores a year. Out of that 8,000, let me tell you that 2,500 are lawyers and chartered accountants. So, therefore, we are proud to be part of that 8,000. But the point is, that figure of 8,000 in this country of 130 crores, looking to the mountain of cash in circulation, that figure of 8,000 should actually be no less than 80,000, if not 8 lakhs, honestly, if we look at the honest truth. So therefore,
something is seriously still wrong with our tax compliance, because something is seriously still wrong with the method of tax collection in this country. The government must be the first to come to terms with it, and I'm sure the Prime Minister, who wants to change all that was wrong with the Congress, and much was wrong with what the Congress did for 60, 70 years in this country, if he wishes to actually clean the system out, he has to start right at the bottom. There is an army of tax collectors out there which is not necessary. You don't have to give them jobs and pensions. They are there only to get jobs and pensions. That army can be whittled down to 25% of what it is today. If you simplify your tax procedures, you make out two clear slabs of 15%, 20%, no exemptions, 15% below a particular threshold, 20% above a particular threshold. You don't need 10,000 exemptions, and therefore, about 5.5 lakh people to adjudicate on a daily basis. And we know what happens. All this faceless assessment and all, Mr. Chairman, I've been a taxpayer for the last 37 years. So therefore, people who actually pay those taxes know what the actual position is. So all this faceless assessment, etc., is complete hogwash. And I'm saying this on the floor of the House. That's as far as taxation is concerned. Therefore, it's a matter of regret that the government has actually done very little to ensure that black money is weeded out of the system, number one. Number two, I was dismayed to hear what the Treasury benches, Mr. Nishikant Dubey, who is normally a very close friend of mine and one of the best articulate speakers on behalf of the Treasury benches today, had to say about cryptocurrency, that cryptocurrency has to be banned sooner rather than later. The government has spoken in multiple voices on this. There is rampant confusion. I'm a member of the Standing Committee. We have deliberated on this. We've heard expert opinion on this. Ahluwalia ji, one of the most esteemed members of that committee, was one of the most vigorous cross-examiners of people who we examined. Today, to ban cryptocurrency is the equivalent of banning the internet. It is an idea whose time has come. So I'm vastly surprised that somebody as sharp as Nishikant Dubey and Supriya Sule ji are advocating a ban in this country. What this government has in fact done by this, the notion of a sin activity, it's as though cryptocurrency dealing is something sinful. What the government has done with that is created so much confusion, and unfortunately the RBI governor, who's one of the brightest and best bureaucrats of this country, has seen, he has gone on record to say this is just hot air. So therefore there is complete confusion. There is hot air on behalf of the RBI governor, who's in charge of issuing digital currency, so which will be equally, I think, hot air, and the government which wants to therefore tax the hot air. And the government has gone on to a 30% slab on the basis that it must be at a higher listing than equity gains, because it is some kind of sin. The 1% TDS, again, lakhs of transactions taking place on a daily basis. Industry was saying, yes, you want to trace, you want to track, have it at 0.01%. Instead, the government goes on to 1%, which is 1,000 times more. So therefore, these are, again, it's symptomatic of complete confusion in the minds of the government, unfortunately, as far as this is concerned. I know I don't have too much time, so therefore I would urge the government, that bill is already 1 year old, it's pending. We in the Finance Standing Committee were expecting this bill to be brought to the committee last August or September. That's what we were told. It's still not ready, which means the mandarins of the Finance Ministry are totally at 6s and 7s. Therefore, I would suggest get a proper task force with professionals involved who will draft this, because otherwise this bill is going to be a disaster. And like the IBC, which has now been, or the Companies Act, which has now been amended 8 times in 6 years, this is just going to keep having to be amended. Mr. Chairman, sir, on the non-tax proposal side, just a couple of very quick things. We welcome the disinvestment of Air India at 51,000 crores. This was long overdue, one of the boldest steps of this government. I congratulate the government. But I think the government again has fallen short by not being bold enough to go ahead and disinvest all the other white elephants that the government is holding on to. There is no reason why the government, which has such a brute majority and such
extraordinary goodwill, which has been shown in the last 5 set of elections. In 4, they've swept. They've got great goodwill. So there is no reason why they can't encash this goodwill and go right ahead and do what they had to do by way of disinvestment. That's one of the real disappointments of this government. Therefore, they need to seriously rethink their disinvestment policy. And the Prime Minister on day one had talked about land monetization, which is again one of the critical areas of the Indian economy, which is again languished completely in the times of the Congress 60, 70 years. On the contrary, the maximum amount of land encroachment has taken place during Congress times, and I think it has been actively supported by their local leaders. So therefore, if to prevent further encroachment, Mr. Chairman, I request the government that the government must aggressively come out with a land monetization policy. Needless to say, my time is up, so I'm not going to waste the time of the House in trying to beseech you to give me more time. All I'm going to say is, while we support the finance bill, the objectives being noble need to be far sharper in their focus and far sharper and far sharper in their execution. Thank you, Mr. Chairman, sir. Thank you, Benagi Mishra ji. Next is Kausalendra Kumar ji. करने के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ व्यय का बजट प्रस्तुत किया है। यह काफी सराहनीय एवं विकास की रफ्तार को बनाए रखने वाला बजट है। जैसा उन्होंने कहा है कि इस वर्ष भारत का आर्थिक विकास दर लगभग 9.2% रहने की अनुमान है। यह कोरोना काल को देखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व की परिणाम है। देश और यूं कहें कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से पिछले 2 साल से त्रस्त है। यह तो टीकाकरण की सफलता का परिणाम है कि हम लोग तीसरी लहर को क्षति को कम करने में सफल रहे हैं, नहीं तो दूसरी लहर को कल्पना मात्र से ही भयावह स्थिति के बारे में एहसास होने लगता है। इस महामारी ने हमारे जीवन के रहन सहन को ही बदल रखा है। सरकार भी सजग है। आज सुदूर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो चुकी है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए भी सरकार बधाई के पात्र है। आज करीब सभी सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, वेंटिलेटर एवं आईसीयू की व्यवस्था हो चुकी है। सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही संभव हुआ है, किंतु प्रथम लहर में हमारे मजदूर भाइयों को जो परेशानियां हुई वह पीड़ादायक था। आज बेरोजगारी एक अहम समस्या खड़ी हो चुकी है। लगभग 45% युवाओं की आबादी है, वे बेरोजगार भटक रहे हैं। महामारी में जिनको रोजगार मिला हुआ था वह भी बेरोजगार हो गए हैं। इस घड़ी में गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान कर राहत का काम किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पीएम गति शक्ति में 7 क्षेत्रों में एक साथ क्लब कर सतत विकास की गति को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इससे अधिक नौकरियां पैदा होगी। आशा है इससे बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। बिहार में भी कोसी मुची नदी को जोड़ने का प्रस्ताव लंबित है। दूसरी बागमती, बूढ़ी गंडक और नून नदी एवं गंगा और बागमती नदी को जोड़ने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के पास लंबित है। इसे भी लागू करना चाहिए। बिहार का 73% भूभाग हर वर्ष बाढ़ की चपेट में। कोसी और गंडक नदी पर नेपाल के मुहाने पर हवाई डैम बना दिया जाए तो बाढ़ से राहत मिलेगा। साथ ही गंगा नदी में गाद सिल्टिंग की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना की आवश्यकता है। राज्य सरकार को इसके लिए सहयोग की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी इस पर भी गौर करेंगे। महंगाई की समस्या पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आज सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ चुकी है। आम लोग इस महंगाई से परेशान और त्रस्त हैं। चाहे पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम जनता तक पहुंच बाहर हो गई है। बिहार में एवं अन्य कुछ राज्य
की दौर, विकसित दौर में काफी पिछड़ रहे हैं। यह तो सरकार की नीतियां, आयोग की रिपोर्ट भी कहती है। अभी आंध्र प्रदेश के हमारे रेड्डी साहब बता रहे थे। तो उसी प्रकार से बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए लगातार बिहार के सांसद और जनप्रतिनिधि, हर पार्टी के लोग बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। खास करके लॉन्ग टर्म अगर विकास नहीं होता है बिहार में तो उसके लिए काफ़ी परेशानी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विकास दर को आगे बढ़ाते हुए खास करके जो केंद्रीय करों में छूट मिलता है उसका लाभ बिहार को भी मिले और औद्योगिकीकरण भी हो, रोजगार का भी अवसर पैदा होगा। इससे राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होगी। सभापति महोदय, सरकार 2022 में किसानों की आय दुगुना करने का वायदा कर चुकी है। यह पूरा होना चाहिए। देश में किसानों की आर्थिक दुर्दशा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिससे कि हमारा अन्नदाता खुशहाल रहे, किसानों को अधिक कैश प्राप्त हो। इसके लिए पशुपालन चाहे मछली पालन, मुर्गा पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही उसके फल सब्जी के लिए जगह जगह कोल्ड स्टोरेज चैन होना आवश्यक है। तिलहन और दलहन की खेती पर अधिक प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार सांसद आदर्श ग्राम योजना भी जो सांसदों के द्वारा चुना गया है वो विकास से परे है। उसके लिए कोई आवंटन नहीं है, न कोई फंड उसके लिए है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सांसद ग्राम योजना को विकास के लिए कोई अलग से इसके लिए फंडिंग करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी का 80 लाख पक्के आवास की घोषणा सराहनीय कदम है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहन का कार्य योजना भी लाभदायक होगा। महोदय, सरकार पुराने गाड़ियों की इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए अधिक सब्सिडी देने पर विचार करे। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा। रेलवे कोरोना काल से जो बंद हुआ है, कई ऐसे जगह हैं जहां पर कोरोना काल का ही स्पेशल ट्रेनें चला करके काफ़ी पैसा ग्रामीणों से वसूला जा रहा है। और जो स्पेशल ट्रेन होल्ड पर रुकती थी, जो लोकल ट्रेन थी, उसको भी नहीं रोका जा रहा है। इससे काफ़ी आम लोगों में परेशानी है। इसको भी दूर करने की आवश्यकता है। बिहार में रेलवे की ECR जोन में करीब 57 नई परियोजनाएं चल रही है, परंतु आवंटन 6,606 करोड़ हुआ है। इससे रेल परियोजनाओं को पूरा करने में परेशानी होगी। मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और बौद्ध सर्किट से भी जुटा हुआ है। लगातार हम लोग मांग करते रहे हैं कि बौद्ध सर्किट से जुटा हुआ है, जबकि कुशीनगर, बनारस, गया बुद्ध सर्किट में हवाई योजना उड़ान शुरू हो गया है, लेकिन नालंदा में अभी तक हवाई अड्डे का कोई कार्यक्रम नहीं चला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव दिया जाए। भारतमाला के तहत NH परियोजनाओं में जो भी NH एवं एक्सप्रेसवे बिहार को आवंटित हुआ है, उस पर तेज गति से कार्य पूरा किया जाए, इसकी आवश्यकता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती अभिरूपा पोद्दार जी। Thank you, Speaker sir, for allowing me. Thank you, sir, for Chairman sir, for giving me an opportunity to speak in the finance bill, sir. Sir, we are slowly coming down from the coronavirus pandemic, and everyone was anticipating in this budget and finance bill to be a booster dose of the economy in the post-pandemic era. But in reality, the booster dose, what means is only for the rich, and the poor and the middle class are only getting a booster dose of high taxation, increasing fuel price, and rising inequality. So the government talks about increasing GDP. I feel it means increasing in gas, diesel, and petrol.
I would point out few announcements that have been made through finance bill. The budget seeks to lay the foundation of achieving a vision of Honorable Prime Minister for India, also making India a preferred choice for world of doing business. The government has been shifted the goalpost. For first we speak that it said in 2022 it will double the farmers' income, house for all in 2022, and 5 trillion economy. I would want to know from the minister whether this target has been achieved or not. If it has been achieved, please do give us the data or the note of all this. Sir, the finance minister has not proposed any change in basic tax rates and maintained status quo for all types of SSAs based the last year. However, it is proposed to extend surcharge 15% of any long-term capital gain earned by individual and HUF, which is currently applicable only to the capital gain on listed shares and dividend income, whereas minimum surcharge for balance income was only 37%. Sir, there has been a demand for clarity on admissible of input tax credit for expense incurred towards CSR activities as well as expense incurred in wake of COVID-19. Since such supplies have been procured in course of business and mandatory law, industry that availment of ITC and of GST charge on such supplies should not be disputed. Sir, there has been a delay in processing of GST refunds, where the timeline is for 60 days, within which refund amount must be disbursed under various categories, leading to working capital crunch to businesses. In view of same, the government may consider granting provisional refund to extent of 90% of the total claim within 7 days filing such refund claim, sir. Sir, the textile industry, where the government has deferred increase in GST rate, the textile industry is facing several challenges, especially in rising price of cotton in international commodity market. The key player in this sector have urged the government to remove the 5% import duty on raw cotton. This move will help to stabilize the cost and import such which will give support to the big and the small businessmen. Similarly, there is a specific sectoral expectation on overall rationalization of customer duty rates, especially on raw material in key sectors like steel, aluminium, etc., to check input and cost of inflation. On other side, certain sectors like pulp, paper, seeking imposition of import duties on specific sourcing material to create level playing fields and protect domestic industry and further make them globally competitive. Sir, in this budget, we have not seen that how much money, black money have come due to demonetization. People, sir, भारत का जनता बैंक के लाइनों में खड़ा रहा, लेकिन आज तक इस देश में कितने ब्लैक मनी इस देश में वापस आया और 100 से अधिक पब्लिक बैंक के लाइनों में जब खड़े थे तो वो डेथ कर गए, उसका वो लोग कितने वापस आया, काला धन वापस आया, इस चीज का कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है, ये भी हम जानना चाहते हैं। दूसरी बात है कि सर, देयर इज अ नो रोड मैप ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ दिस कंट्री। लेकिन इस देश के कुछ मंत्रियों ने कहा कि अगर आप शिक्षित हो तो आपके पास नौकरी नहीं है तो आप पकोड़े तलो, चाय का दुकान खोलो, ये भी सही बात नहीं है। और सर, आप अपने वक्त में बोलिएगा। और सर, जो हाई प्राइस ऑफ फ्यूल के वजह से हर चीज का कमोडिटी का दाम बढ़ते जा रहा है, ये भी एक सोचने वाली विषय है। और चौथा पॉइंट मैं अपना बोल के बात रखूंगी। सर, जब कोरोना के टाइम में अचानक लॉकडाउन के वजह से इस दिल्ली से काफी प्रदेशों में वापस जब माइग्रेंट वापस घर गए थे, तो जो लोग रास्ते में ही डेथ किए, उसमें से कहीं देखा गया कि जो मेन
अर्निंग पर्सन थे वही लोग डेथ कर गए, लेकिन उन परिवारों के साथ क्या होगा, उन परिवारों को कोई हेल्प किया जाएगा कि नहीं, इस विषय में भी इस फाइनेंस बिल में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। ये हम जानना चाहते हैं। यही बात बोल के मैं अपना बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री के सुरेश। Thank you, Chairman sir, for giving me this opportunity to participate in the debate on Finance Bill 2022-23. Without any further delay, I am moving the pertinent issue that I would wish to raise. Sir, I am speaking exclusively for the marginalized people. I am not going to all other details, but I am particularly specific issues for relating to scheduled castes and scheduled tribes and other backward communities. As in the case any budget or state and sectoral allocation made, the scheduled castes and scheduled tribes are the most affected and least allocated. Sir, in the Union Budget 2022-23, the allocation of scheduled caste stands rupees 1,42,342.36 crores and 89,265.12 crore for the scheduled tribes. 329 schemes for SC and 336 schemes for ST have been allocated for the welfare of scheduled caste and allocation for welfare of scheduled tribes respectively. While the allocation appears large and generous, the proportion of targeted schemes is 37.79% within rupees 5,37,900 crore allocated for targeted scheme under SC budget, within 43.8% with the rupees 39.113 crores for STs. This is the disparity of these marginalized people, sir. Sir, Honorable Chairman, sir, you are very much aware of that. The marginalized people, scheduled caste, scheduled tribe, what is their living condition? Inflation is going every day, and also essential commodity is inflation, price hike is also going in a drastic level. And also, sir, the employment opportunity also decreasing. Who is the ultimate victim of this country? The government policies and also government various government policies. Who is the victim of this country, sir? We are not realizing. Ultimately, the victims are scheduled castes and scheduled and other vulnerable people. Sir, the rest of the schemes under Dalit and Adivasi budget are de facto general schemes. With the mask of SC or ST budget scheme, they do not qualify as SC/ST schemes that will be benefit communities. Considering the general nature of the schemes, these will not address the development gap between SC and ST, rest of the population as mandated by the guideline. The government has been voicing the need of the development of the Dalit and Adivasi community. However, the same is not reflected in the budget financial year 2022-23, sir. Sir, let me explain the same SC and ST wise. Budget for scheduled caste and for scheduled tribe 2022-23 in rupees crore. Total expenditure budget estimate 22-23 is SC for 4,361 crores, ST 4,444.361 crore as per total expenditure through budget and resource of public enterprises as per statement expenditure profile financial year 2022-23. Total eligible central sector scheme and centrally sponsored scheme for SC/STs 1,230.836 crores and STs 1,226.82 crores. Due to allocation for scheduled castes and scheduled tribes as per the new guideline of Niti Aayog is rupees 182.9
1,82,976 crores for SC and 98,664 crores for STs. Allocation for SC schemes as per Statement 10A and ST scheme as per Statement 10B is rupees 1,42,340 crores SC and 89.265 crores ST. Therefore, the total gap in allocation is rupees 129.18 crores for SCs and rupees 50 lakhs 0.77 crores for STs. This has always been the case of the last 7 years. Not only this year, not only last year, last 7 years, despite giving the high figures, there has been no actual and sincere allocation in any successive budget. Apart from the budget discrimination, the government is extending its humiliating stance on rejecting the Dalits in every walk of life. Sir, available data shows there is a total number of atrocities on Dalit women, about 7,000 crimes, with about 10 Dalit women raped on every average daily. Sir, however, the budget allocation in this year only 600 crores for the effective implementation of SC/ST POA Act, out of which about 180 crores to address violence and crimes against Dalit women. Sir, the trans-Dalit community do not find mention in the budget, and this is totally invisibilized without having any allocation. Sir, the discrimination of allocation for post-matric scholarship, very important, sir. Sir, the post-matric scholarship in